Joining hands for ringing the bell of democracy, my friends, is an important that we ensure of standing together for strengthening the democratic fabric of our nation. All the students are also joining the dignitaries for ringing the bell of democracy. Applause, my friends. Everyone in the audience, a big round of applause. The bell is time as we come the traditional land. All the dignitaries are now joining hands for lighting the traditional lamp, a light of wisdom, a light that will keep us showing the path. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampada, shatru buddhi vinashaya, deepajyoti namostute. An occasion where we are witnessing Shri Sachin Savanji. I request him to join us for lighting the traditional lamp. A big round of applause, my friends. All the dignitaries have joined hands for lighting the traditional lamp, both in the commencement of 19th batch of Masters in Political Leadership and Government. I request all the dignitaries to kindly accept the chairs. Ladies and gentlemen, esteemed faculty members, honored guests, most importantly, the future leaders of our great nation. Good morning and welcome to the new academic year commencement ceremony of MIT School of Government, SOG. I am deeply honored to be standing before you as we welcome and celebrate the beginning of transformative journey of our students. MIT SOG, a visionary concept of Sri Rahul V. Kara, which was founded with an unwavering commitment to nurture ethics, spirited and dedicated political leadership for our beloved country. As we gather here, we are not only to celebrate the achievements of our students, but also the profound impact this institution has had on shaping the leadership. Welcome each one of you for the commencement ceremony of Masters in Political Leadership and Government, a 2 years postgraduate degree program, MPG batch 19. I would now like to request all the dignitaries on the dais to rise in their seats for national song Vande Mataram, which would be followed by World Peace Prayer. So I request my technical team to kindly relay. Supalam Malayaj Sheetalam Tasya Shamalam Mataram Vande Mataram Subhajyosna Pulakita Shobhinim Suhasinim Sumadhura Bhashinim Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Thank you. I request everyone to fold their hands, close their eyes. Please remain standing for a very important tradition of this institution,
World Peace Prayer, a prayer that does not talk about any caste, creed, religion, or any section of society. I request everyone to close their eyes, calm down from within, bring the image of their mother, father, their deity in front of their eyes, and wholeheartedly participate in World Peace Prayer. जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा पदार्थमति प्रकाशो गणे निवृत्ति अवधारी गोदी ब्रह्मा गुरुर्विष्णु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते आदाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you. Kindly be seated. I, Professor Neha Joshi, once again welcome you to the commencement ceremony of the 19th batch of the Masters in Political Leadership and Government by MIT School of Government. My dear friends, the MIT School of Government is first of its kind to offer a master's program in political leadership. I now invite Dr. K. Director Academics, MIT School of Government, to welcome our students. Morning, Namaste. On behalf of Professor Vishwanath Karat, the founder president of MIT World Peace University, Sri Rahul Karat, the founder of MIT School of Government and the executive president of MIT World Peace University, Vice Chancellor and all other academic leaders and administrative leaders and the MITWPU team. I wish to extend a hearty welcome to all of you to the commencement ceremony of the MPG 19th batch of students. Before moving to the customary address, I wish to touch upon a little bit about the journey. It is not a conventional academic program which is heavily loaded with classroom sessions. It's a unique blend of theory, experiential learning, and internships, and many such unique attributes. And in addition to the limited core faculty, we have visiting faculties drawn from political leaders, from bureaucrats, from academicians, social activists, people from media, judiciary, etc. And the students undergo a lot of lectures, interactive sessions with these leaders, and in addition to that, they also make visits to the model villages and make national study tour in which they interact with leaders from different political spectrum. And we give a message to the students, please keep your learning and the sense of learning very active, because even when you make a visit to an Anganwadi,
you may have to, you can learn from a semi-literate Anganwadi worker or an illiterate Anganwadi helper. And the learning study to the model villages like Hivre Bazaar and many villages of Maharashtra. And the students undergo multiple internships, election survey, election campaign, constituency mapping, social internship with an organization, and political internship with a political leader, not less than 6 months in their journey. And one of the unique attributes of this course is a biography presentation, when the students learn and analyze and describe and present at least 3. Each student makes a presentation of at least 3, one international leader, one national leader, and one regional leader. And in addition to that, we have thematic workshops on survey, campaign, constituency management, and many things like that. And another uniqueness of this course is the diversity. Diversity in terms of the geographical region from where the students come, diversity in terms of gender, diversity in terms of the disciplinary background, and diversity in terms of their ideology. We have students, the present batch, we have students from 38 students, we have 31 boys and 7 girls, and they are from 13 different states of the country. And in addition to that, I would like to highlight some of the unique initiatives which we are making in the recent past. Every student undergoes an outbound training in the first semester, and we have added thrust on the field visits where they interact with the social leaders, they interact with the social activists, they interact with the practitioners of organic farming, watershed management, waste management, and all that. And the thrust on biography presentation I have already highlighted. And we have also started an individual student profiling where each student's journey from the start of their journey with the SOG over the period of 2 years is being documented so that it will help them to groom. And we also started a debate club. Of course, it was already there, but we have strengthened it and a lot of activities are being taken up. In addition to that, we have a political research laboratory where each student is expected to pick up and analyze an issue from any one state, and it is expected to help more about their analytical thinking, analytical presentation, and things like that. And they are also encouraged to write blogs and articles. I wish to highlight that unique initiative MITSOC is to bring about changes in the mindset of people about politics. The seed thought of Sri Rahul Karat continues to provide a new direction, the pattern and quality to the political landscape of the country. While we do not make any tall claim, we understand that whatever we do may be at the most viewed as a drop in an ocean, but we have the firm conviction that many of these drops of these leaders who are committed, compassionate, dynamic, ethical, professional vision will make a difference in the days to come. We are very sure that the students who are entering with diverse political domains like electoral politics, functional politics, organizational politics, and development politics will contribute in a big way to national building. And this is not just our expectation or hope, but this is our strong faith and conviction. And with this, I would like to move on to my primary duty of welcoming the guests. We have a plethora of guests from diverse political ideologies. We have Madam Kusmita Dev, she will be joining soon. Madam is the national spokesman of All India Trinamool Congress. And we have Sri Vijay Vatativar, Honorable Leader of Opposition from the Maharashtra State Legislative Assembly. And we have Sri Sachin Sawant, the General Secretary and Spokesperson of Maharashtra Pradesh Congress Committee. And we have the Chief Guest as Advocate Rahul Narvekar, the Honorable Speaker of Maharashtra State Legislative Assembly. And I welcome all the guests and the speakers, and I welcome the Honorable Vishwanath Karatji, Sri Rahul Karatji, and my colleagues and all academic leaders and the students from schools of economics, public policy, law, journalism, and because these are the schools which are quite relevant and quite connected with this program. And once again, welcome you, all of you. Thank you, sir. Thank you very much for setting the tone at the beginning of academic year. And you have already given them so much that of the information that what they would be doing, I'm sure they would be more than excited. Thank you very much. I would now like to request revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir along with Sri Rahul Karat sir to kindly felicitate and welcome the dignitaries for today's function. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly. Please put your hands together and welcome Advocate Sri Rahul Narvekar ji.
A big round of applause, my friends. All these stalwarts have taken time out from their very, very busy schedule. I would now like to request sir to kindly felicitate and welcome Honorable Leader of Opposition of Maharashtra Legislative Assembly, Shri Vijay Wadettiwarji. A big round of applause, my friends, for the Honorable Leader of Opposition, Shri Vijay Wadettiwarji. Thank you, sir. Thank you very much for taking time out for us. I now request, sir, to kindly felicitate and welcome Shri Sachin Sawantji, General Secretary and Spokesperson, Maharashtra Pradesh Congress Committee. Thank you very much. Thank you very much. My friends, on this important occasion of marking the commencement of new academic year, let us take a moment to reflect on MIT SOG's remarkable journey. In the year 2005, MIT SOG embarked on a mission that was truly groundbreaking. It became the first school of its kind dedicated to crafting the political leaders of the future. Its flagship program, the 2 years Masters in Political Leadership and Government, MPG, is a testament to this commitment. With this, I would like to request my technical team if they can please show us a small film created on MIT School of Government. MIT School of Government is the first institute to initiate the leadership program in politics and government. After the independence, there was a need to have an institution to train the aspiring politicians or the young leading generation of the country. In 2005, MIT SOG was conceptualized by Rahul V. Karad, the executive president of MIT World Peace University, Pune, with a vision of creating ethical, spirited, and committed political leadership for the country from the grassroots and from all walks of life. MIT School of Government is now a part of MIT World Peace University. It offers a 2 years postgraduate degree program in political leadership and government, MPG. The program comprises of 1 year on-campus learning and 1 year off-campus training. Young leaders of our country should respect the politics. They should not feel that all politicians are corrupt. In order to strengthen the democracy, students having good character and value should enter the politics. This is the thought given by Rahul Karad. MIT SOG is spreading this thought in the youngsters. Till date, more than 350 young leaders are set for their mission. They have grabbed key positions in the political parties or government regulatory organizations, and some have succeeded in getting the memberships of the legislative bodies. Obviously, it has backbone of the education imparted at MIT School of Government. Eminent speakers from all walks of life, be it politics, journalism, economics, sociology, film, guide the participants. Students are exposed to listening, meeting, interacting with more than 100 various scholars and speakers throughout the year. This is the peculiarity of this unique residential learning program. As a part of the program, students visit the villages, study their administrative systems, and also extend visits to the state assemblies, houses of the parliaments, etc. While doing this, they learn to differentiate, make comparative study of the developed and underdeveloped villages, better and progressive constituencies. Visits to various party offices, government offices make such student rich in knowledge and experience. They go to different parts of the country,
meet the politicians and get trained with them. The program comprises of the one-year internship, which facilitates the students to learn directly from the politicians or in their offices. They are exposed to various social issues also. International study tour makes the student compare various political systems, ideologies, structure of nations. Their vision is broadened and mindset is changed. Rahul Karad, the founder of MIT School of Government, says that in order to strengthen the democracy, educated young generation must lead the politics. MIT School of Government is thus molding the students to empower themselves for knowledge, power and courage. This is a small contribution of MIT School of Government towards the nation building. Journey of MIT School of Government. Ahead, I would now like to call upon two students of Masters of Political Leadership and Government Program, Batch 19, to express their views, starting with B.Gdeshmukh from Nagaland, followed by Sejal Singh from Maharashtra. Good morning, everyone. I extend my sincere respect to Revered Professor Dr. Vishwanath D. Karat sir, founder and chief patron of Myers MIT, Shri Rahul V. Karat sir, executive president of Myers MIT and founder of MIT School of Government. Special greetings and respect to our esteemed guests for today, and lastly, warm greetings to my respected professors, faculty of MIT School of Government, and my dear friends. I feel deeply honored to address each one of you on this special day. Not long ago, I was a wandering youth, keenly interested in public policy and politics, but unsure of how, when, and where to start. That's until I found this unique school in the country, which was like a lighthouse in the ocean, guiding aspiring students and youths like me to take brave steps into politics. We all understand that politics is not just another job. It doesn't guarantee a 9-to-5 routine. Politics is like an ocean, and as Sir Sridhar Pabisetti said, we have to be like a drop of curd that makes difference everywhere we go. And in the words of Sir Garrison, we have to be those little drops of water that make the ocean. I believe we are all here to be those vital drops of water. We've taken a bold decision, transitioning from various educational backgrounds to join this program because we are here with a purpose. It's been 2 months since our classes began, and I can proudly say that I have immensely learned a lot in this short period. This school provides us with a platform to become the leaders of tomorrow, from honing our public speaking skills to meeting and networking with various renowned personalities. Our classroom is a mini India in itself. My fellow friends and classmates represents 13 to 14 states of the country. It signifies that the strength of India is in its diversity. I firmly believe that this is just the beginning and there are many more opportunities waiting for us ahead. I'm extremely excited and eagerly looking forward to what lies ahead, starting from the field survey this week to the National Study Tour, Bharatiya Chhatra Sansad, and the National Legislatures Conference next year. Finally, I would like to end my note with a sincere gratitude to Rahul V. Karat sir for creating the School of Government, for letting youths like me from a faraway state of Nagaland enjoy the benefits of modern India. Thank you all. Jai Hind. Next, I would like to call upon Ms. Sejal Singh from Maharashtra. Once you start working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it. People who work sincerely are the happiest. These words are said by Chanakya,
the man behind the strength of the great modern empire, and whose teachings are true about politics, defense strategy, and economics even after 2000 years. Namaste, good morning everyone. My name is Sejal Singh and I am a part of MPG batch 19. It is truly an honor for me to address this gathering on behalf of my fellow classmates. Fun fact about myself, I'm actually an alumni of Bachelor's of Political Science from School of Liberal Arts of this university. And having heard about School of Government from my faculty members at School of Liberal Arts, I was clearly very intrigued about the name political leadership. What would they teach us? What would we learn about leadership? Well, I had some preconceived notions about this, but the past 2 months have told a completely different story. Not only have we learned from a very experienced and dear faculty members in our classroom, but we have also learned new perspectives by guest lecturers such as Mr. Sanjeev Mishra, who is a former IRS officer, and the recent lecture on leadership by Lieutenant Governor A.K. Singh ji. Not to forget the field visits that we've had to Swarup Vardhini, which works for the underprivileged children, Saheli HIV/AIDS Foundations, and Gandhi Bhavan, which were eye-openers and gave us insights into the ground reality of what is happening in our nation, which is very important for us future political leaders. Who can forget the G20 Interfaith Conference that we had? It was such an enriching and exciting journey for all of us. While looking more into the future, as I look at my classmates right now, I definitely see future political leaders, future Vidhan Sabha members and Lok Sabha members sitting in front of me. While I do see the clear leadership in our class already, I wish for, circling back to the quote that I said from Chanakya, I wish for all of my classmates to have sincerity in their hearts, to be the leader that the nation needs, to be the leader that puts others in front of themselves and to keep their comfort last. I wish that they go through hardships so that they can come out even stronger and prove their willpower. I wish for them to take risks and rise up from the failures that they face. We all know the famous Bollywood quote, "Picture to abhi baki hai mere dost." This is just the start. It has only been 2 months. We have quite an exciting journey in front of us, such as Bharatiya Chhatra Sansad, National Legislative Council Conference, and our internships that are waiting for us. I would like to not only wish my classmates best of luck, but also extend gratitude towards my dear faculty members, and especially Rahul V. Karat sir, for forming this great school of government, only one in Bharat, that truly focuses on making learned and experienced leaders that the nation needs. Dhanyavad, thank you. Thank you very much, Momito. Thank you very much, Sejal. And yes, as Sejal indeed mentioned, it is our duty to mention the visionary behind the MIT School of Government and National Legislators Conference, who deserves our heartfelt admiration and praise. His unwavering commitment to fostering leadership, democracy, and positive change is nothing short of inspiration. Sri Rahul Karat sir's dedication in providing political training to aspiring young politicians through MIT School of Government and its instrumental role in organizing National Legislators Conference Bharat showcases the profound understanding of the importance of democratic values, unity, and good governance. His vision and tireless efforts have not only transformed the landscape of leadership education in India, but has also brought in towards the brighter and equitable future. My friends, I would like to share a small clip here on this occasion, which was the words which were shared by the Honorable Governor of the state of Maharashtra, Shri Ramesh Baisji, during his address in First National Legislators Conference. I request my technical team to kindly relay. एक विधायक को कम से कम 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और विभिन्न राज्य विधानमंडल इस दिशा में पहल कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।
time we have been communicating to the society that all our Vidhan Sabhas are the temples of democracy. They are the mandirs of democracy. And with that, very mission and purpose, I think you as opposition leader coming along with respected Shri Rahul Narvekarji, it is very important for this very cause and purpose of building up this very institution, ethos and the foundation, MIT School of Government, the country's only school to develop the future politician. Thank you for your participation, Shri Gdeshmukh. You are 6 times MLAs, ministers, so many positions you have decorated, and you have come from the grassroots. I have a great sense of satisfaction that person of your background with a humble such journey, what you could achieve is a very important example for budding leaders of the School of Government. And of course, we have School of Law, School of Journalism, and various related institutions to this very cause of this very idea of MIT School of Government. So thank you all the students for your participation, and I think you all have to take the benefit of this very important institution, the School of Government. We have another very dear friend here sitting, Mr. Sachin Sawant, the national spokesperson. He used to be, he's the state leadership now in the Congress. And from day one, I must say in 2005, he is supporting this idea of MIT School of Government, most qualified, competent engineer, and with a solid family background. He is committed just for the public life. There is no other agenda in his life that how my party, he's from the Congress leadership, Mr. Rahul Gandhi, handpicked some 10 years before, some of those 15 years before, chosen those few important leaders from Maharashtra. So your participation is very, very important, Mr. Sachin. So thank you so much for coming here today. Professor Parimalji, research associate, research head of this institution, the director, Professor Pebisetti, our director here sitting, Professor Girisan, Professor Pandit Vasantrao Gadgilji, who is just 93 years of age, the Janani Janmabhoomi, this inspiration. Panditji, thank you so much. You are always there to support and bless. Our registrar, Professor Kamtekar, the chief academic advisor, all the deans, directors, and School of Law, Madam Inamdarji is there. Our another leaders are sitting here. So it's a wonderful journey. The 19 years, the purpose of showing this film just now, the MIT School of Government, what Honorable Governor said just now, I felt that I'm just going to take 5 to 7 minutes. And this very agenda, the School of Government, the educated youth must come in public life. Let us not shy away from public life. पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, और क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोगों ने देश का ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा सिंपल तरीके से कि भाई राजनीति में ड्राइवर के लिए भी लाइसेंस होता है, राजनीति में कोई पढ़ लिख के कोई आता है क्या? मुझे ये भी सवाल पूछा गया विजय वडेट्टीवार जी की भाई वसंत दादा पाटिल जी पढ़े लिखे नहीं थे, इतने अच्छे नेता थे, कैसे क्या हो गया भाई? तो मैं इतना ही कहता था कि भाई अगर उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम किया होता तो वो एडिशन होती कि सब्सट्रैक्शन होती? तो मुझे लगता है कि हमें एकेडमिक और समय के साथ academic coaching, academic guidance for our politicians, the budding politicians, it is so important. That's what I feel, and it is very, very important subject. We as the MIT World Peace University and our founder, most revered Dr. Vishwanath Karad sir, he said, ki Rahul, nothing doing. This is a very, very important cause, and we have to champion this cause. And that's how last almost 20 years, relentlessly, we are working in this direction, and it has given such a wonderful benefits to overall our youth in the country. We all know that 2010, I was some of you are aware that I was restless, Rahul Narvekarji, that how can this small number can make a difference? We established a platform called Bharatiya Chhatra Sansad, the youth parliament. Today, across the country, everywhere, so many platforms are already created and emulated, and we have guided many of them, the Madhya Pradesh Chhatra Sansad, Gujarat Chhatra Sansad, sitting here. And the youth parliament concept, now Government of India also, the youth parliament ministry also, they have started this platform called youth parliament. I am proposing that all the MLAs in their own constituencies, 4,500 MLAs, can they conduct the youth parliament beyond party line? We have 4 crore students in this country who are about 12th standard, above 18th year of age. You know, they are in our graduate system of our country. Can we have a number of such youth platforms? Because America, I always say America is a very mature democracy. And to move towards that direction, we as the greatest and the largest democracy, I think the education, and the governance education particularly, it is so important. The 11th, 12th, the civics we learn in the 6th, 7th, 8th, 9th standard. But I think in the later stage, somewhere, and which will give the belongingness for all of us, for our country and the
the patriotic feeling and overall involvement in this mission of the societal transformation will be much, much impactful. That is my feeling, if we really look into this aspect of training and education. And with that spirit, Rahul Narvekarji, this what Honorable Governor also said. You also spoke about this very vision of during the National Legislators Conference, 2,000 MLAs, one private institution, how it could gather. Last 75 years, it was never happened. But people like you and various other your colleagues of various assemblies, they all supported this idea. Some 28 Vidhan Sabha speakers were present during this particular convention in just Mumbai just 4 months before. And 50 parallel sessions, and a very, very beautiful example. And it was a blessing on our country, my dear friends, that such a harmoniously, all these MLAs, 100 political parties, 100 languages, we all sat together and there were deliberations that how to transform our nation beyond party. And there we need some such thinking for the national security issues or various other issues. I think beyond party line, how can we think? I remember there was a terrorist attack on Mumbai. And, the next day, that time it was the Congress government in Maharashtra. The next day news appeared from the opposition party. I think that was BJP was the government, something, and that was against the government. And further, something happened, I remembered, in the Congress era also, vice versa, you get me. The parties are putting some such communications and notifications, and there is some self-restraint. Me, I'm making very bold statement as academic institutions, my dear friends. So we all need to think on these lines. The maturity, the Atal Bihari Vajpayee ji or many such other tall leaders, कि beyond party जाके हमारी मन की व्यापकता हम कैसे बढ़ाए, ताकि ऐसे मुद्दों के ऊपर एक कॉमन कंसेंसस होना चाहिए. कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, हमारे नेता करप्ट चाहिए? Do we want to get ruled by the bad people? तो इसके ऊपर कोई चर्चा हो नहीं सकती. हमें एजुकेटेड लोगों ने मुझे ऐसे लगता है सभी पार्टी के अध्यक्षों ने आके अगर एक रिजोल्यूशन किया, राहुल जी, सभी पार्टी के अध्यक्ष, हमारे आने वाले समय में हमारा कोई भी कैंडिडेट वेडेटिवार जी एजुकेटेड होगा, उसको कम से कम डिग्री होनी चाहिए, एक रिजोल्यूशन पारित करने की बात. ऐसी कुछ चीजें अगर हम कॉमन फोरम के आके हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है एक नेशनल स्पिरिट से. मैं 22 मुख्यमंत्रियों को मिला इस एनएलसी के दौरान, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के दौरान, अपोजिशन लीडर्स को भी मिला और सबको जाके मैं वही बात कर रहा था, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं. आई एम अ नेशनलिस्ट पर्सन, आई एम अ पेट्रियोटिक पर्सन, आई एम एजुकेशनिस्ट. हमें सबको जुड़ना है, बिकॉज हर एक को लग रहा था ये बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, इतने 2000 एमएलए पूरे इकट्ठा करने की बात बोल रहे, कैसे क्या होगा. मैं बोला इस पीछे सुमित्रा महाजन जी का मैंने नाम लिया, वो इसके ऊपर थे, मीरा कुमार जी, शिवराज पाटिल जी कांग्रेस पार्टी से, तो और बीजेपी के मैडम सुमित्रा जी, मेरा, तो सभी लोगों का इसमें जुड़ा होके ये जो सफलता डेमोक्रेसी के लिए जो एक इंस्टीट्यूशन 3000 पन्नों की वेबसाइट है, माय डियर फ्रेंड्स. आई विल रिक्वेस्ट ऑल द लॉ स्टूडेंट, जर्नलिज्म स्टूडेंट टू सी nlcbharat.org. Very important website, and it has become a permanent institution. And all the law students we are giving the opportunities with all the MLAs. You will get the opportunity to get attached for 4 months. You will be able to, you as a law executives and they as a lawmakers, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलने वाला है. तो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के इन सभी शाखाओं का डायरेक्टली आपका इसके साथ लिंक है. स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, एंड ऑफ कोर्स स्कूल ऑफ गवर्नमेंट विच इज डायरेक्टली वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, माय डियर फ्रेंड्स. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन. आई वाज टेलिंग माय डियर फ्रेंड मिस्टर सचिन सावंत जी जस्ट नाउ दैट किसी के जनरली राजनीति में जाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको किसी का तो उंगली पकड़ना है और आगे जाना है. मैं बोला इस स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की ब्यूटी ये है कि आपको किसी के भी पैर दबाने की जरूरत नहीं है. एक टैलेंटेड पूल ऑफ स्टूडेंट्स, दे कम हियर, दे गिव देयर पार्टी आइडियोलॉजी डायरेक्शन, एंड देन वी राइट टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, हियर इज अ बॉय हु वांट टू वर्क इन योर पार्टी, एंड दैट्स हाउ दे गेट द अटैचमेंट. तो सब बच्चों को अटैचमेंट मिलती है और अपने अपने अलग अलग पार्टियों में इसी तरीके से अभी 6 MLA बने, अलग अलग पार्टियों में पद लेके स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं, ऑफिस बेयरर्स है बड़े बड़े पदों के ऊपर, और आप सब लोगों ने 19 साल का ये एफर्ट है. तो उस भूमिका से राहुल नार्वेकर जी मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से आपकी लाइब्रेरी वहां पे है, आपका पूरा सेटअप वहां पे है, 4-5 शिक्षक, और वी कैन क्रिएट अ नॉलेज पार्टनरशिप इन दैट. और एक अच्छा स्कूल महाराष्ट्र की विधानसभा में भी एक खुल जाना चाहिए, और बाकी भी विधानसभाओं में खुलने के लिए हम सभी विधानसभा स्पीकर से बात करें, लेकिन ये संस्था महाराष्ट्र में है. और मुझे लगता है कि नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या होगा. मुझे कई लोगों ने पूछा राहुल जी ये क्या, इससे मैं इतना समझता हूं कि 70 के दशक में तमिलनाडु कर्नाटका में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस निकले. महाराष्ट्र में वो आते आते 13 साल लगे. 83 में our founder, beloved founder Dr. Karad, he wrote article in Times of India, Maharashtra needs private colleges on the lines of Tamil Nadu and Karnataka. तो 12 साल लगे. अभी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 7 साल पहले बने, हमसे
बहुत छोटे राज्यों में 12-15 साल पहले स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एक्ट आ चुके थे, और महाराष्ट्र जैसा प्रोग्रेसिव राज्य वेडेट्टीवार जी इतना लेट क्यों हुआ उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आने के लिए, मुझे नहीं पता। तो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छे प्रैक्टिसेस की जब बात सभी राज्यों में अगर हो जाए तो ये इसको बहुत हम स्पीड अप कर सकते हैं। भारत का जो ग्रोथ इंजन है हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोपेल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तेलंगाना राज्य में उन्होंने अभी तलाठी का सिस्टम निकाल दिया है, बोले तलाठी सिस्टम दे हैव रिमूव्ड इट। तो मुझे नहीं तो वेदर इट इज गुड बैड आई डोंट नो, बट दे हैव रिमूव्ड इट। दे सेड कि देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, तो कैन वी लर्न फ्रॉम तेलंगाना, कैन वी लर्न फ्रॉम सम अदर स्टेट्स। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, और इमेजिन करिए कि सभी विधानसभाओं में 100 बच्चों की बैच इस तरीके से अगर हम एनरोल कर पाए और 30 के 30 विधानसभाओं में इस तरीके के स्कूल अगर निकले तो 3000 लोग भारत का नेतृत्व करने के लिए राहुल नार्वेकर जी तैयार हो सकते हैं। और एक पढ़ी लिखी पीढ़ी, एक एजुकेटेड पीढ़ी भारत का राष्ट्र निर्माण और भारत का एक चित्र बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बयां कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि गवर्नर साहब का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी विधानमंडल और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में उनका साथ में आना। तो बहुत कुछ विचार है मेरे मन में, मैं बहुत आधा घंटा 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम की पाबंदी है, 1:30 बजे हमारे ऑनरेबल गेस्ट को निकलना है। तो मेरे बस 2 मुद्दे हैं कि सभी विधानसभाओं में इस तरीके के स्कूल्स निकले, और तब भारत का, मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला राहुल आप कंपटीशन क्यों बढ़ा रहे हैं, मैं बोला एजुकेशन मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ व्हाट आवर फाउंडर हैज लेड डाउन। सो ये इसमें तो मुझे लगता है कि तो वही भाव से यूथ पार्लियामेंट की भी संकल्पना सभी MLAs ने अगर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरे भारत में अगर हुई तो महाराष्ट्र के बारे में स्पीकर सर आप इसमें लीड ले सकते हैं, और सभी MLAs को इस तरीके का ओरिएंटेशन और अगर रखा तो बहुत सिस्टमैटिकली 2-2 हज़ार पूरे भारत महाराष्ट्र में 10-20 लाख बच्चों को हम सेंसिटाइज करके इस दिशा में उनका जो गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए उनकी कमिटमेंट हम और भी अधिक उसमें रुचि उनकी बना सकते हैं। तो फिर से एक बार ये जो 19 बैच आप सब लोगों का अभिनंदन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ आप में से 60% बच्चे आपके माँ बाप से झगड़ा करके भी आए हैं यहाँ पे, बिकॉज इसमें कोई प्लेसमेंट नहीं है राहुल जी कि MBA में जाते हैं तो इमीडिएटली जॉब है, यहाँ पे जॉब नहीं है। तो इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इट इज़ वेरी कमेंडेबल वेडेट्टीवार जी कि इस प्रोग्राम में आने के बाद आप BBA MBA दूसरे प्रोग्राम में जाते तो तेरे नौकरी की है, यहाँ पे नौकरी, राजनीति में कितनी अनसर्टनिटी है, आपके हर एक के चेहरे से वो स्ट्रगल दिखता है, वो एक अलग ये दिखता है, और सचिन जी हंसता है तिकड़े, तो कहने वाली बात है। तो इसलिए इनका मुझे स्पेशल अभिनंदन करने का मुझे ये लगा। तो आप जिम्मेदारी से आप सब लोग अगला 2 साल, 1 साल का यहाँ पे आपका फुल टाइम और 1 साल राजनेताओं के साथ आपको अटैचमेंट मिलेगी, और बहुत सारा आपका उस एक जिम्मेदारी का एहसास लेते हुए आप बहुत कुछ अच्छा आपके हाथ से होगा, इतना ही मैं यहाँ पे अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और आपके सबके गणमान्य व्यक्तियों का भी यहाँ स्वागत अभिनंदन करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you for your words of wisdom. And I would like to mention over here that our executive president, Shri Rahul V. Karad, had given the thought more than 3 years ago that our country should be called Bharat and not India. A big round of applause, my dear friends, for our executive president. Thank you, sir. Thank you. My friends, it is the time that I request the special guest to address the gathering. The General Secretary and Spokesperson, Maharashtra Pradesh Congress Committee, Shri Sachin Sawant ji. But before I request him to address the gathering, I request my technical team to relay a short film on him. He is one of the politicians who is well connected to the grassroots and is a voice of the common, underprivileged and needy sections of society. Shri Sachin Sawant is a distinguished political leader and has served as the General Secretary and Spokesperson of the Maharashtra Pradesh Congress Committee since 2016. He was one of the best 6 youth workers selected from amongst all the youth party activists who worked for the Indian National Congress in the 2007 Uttar Pradesh Assembly elections. With his brilliant display of organizational skills in the past, he was made the General Secretary of the Maharashtra Pradesh Youth Congress in 2008.
In 2018, he was awarded the Newsmakers Achievers Award 2018 as the Promising Young Politician of India. We warmly welcome Shri Sachin Sawant. नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी की ओर मैं अभिनंदन करना चाहता हूं राहुल कराट जी का कि ऐसे मान्यवरों को आप एक साथ लेके आते हैं। विचारधाराएं अलग होंगी और पर अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देश का नेतृत्व करते हैं, राज्य का नेतृत्व करते हैं और सभी लोग एक साथ आते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसी तरह से हमारे एक विधानसभा अध्यक्ष जी को बुलाया आपने और नेता विपक्ष को भी यहाँ बुलाया। हमारे आदरणीय नेता महाराष्ट्र के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार जी, जिनकी दूरदृष्टि से ये एक बहुत बड़ा परिवार पूरे महाराष्ट्र में नहीं देश भर में काम कर रहा है, जिनकी लगन से, जिनके विचारधारा से आज एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ MITPU यूनिवर्सिटी का, ऐसे डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे राहुल कराट जी, डॉक्टर ग्रेसन, डॉक्टर परिमल जी और आदरणीय मंच और मेरे प्यारे मित्रों। It has always been a pleasure for me to come over here and be part of this wonderful exercise that aspires to contribute immensely in the development of this country. एक ऐसा विजन है जो मैं समझता हूं कि मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। वैसे मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है MIT से और ये स्कूल ऑफ गवर्नेंस का जो एक पौधा लगाने की कोशिश राहुल कराट जी जब कर रहे थे, जब वो चर्चा हो रही थी और जो शुरुआत हुई, उस वक्त से मैं यहाँ आ रहा हूँ। बहुत सारे मैंने लेक्चर भी लिए हैं, लेकिन आई मस्ट ऑनेस्टली एडमिट कि ये पौधा इतना बड़ा वृक्ष बनने जा रहा है ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे लगा था एक ऐसी कल्पना है जो आगे कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये पूरा श्रेय राहुल कराट जी के नेतृत्व को जाता है, उनकी लगन को जाता है, उनकी दूरदृष्टि को जाता है। आज MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस का ये मास्टर प्रोग्राम जा रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड गवर्नमेंट। लीडरशिप, नेतृत्व क्या होता है? मैं समझता हूं कि नेतृत्व सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता। नेतृत्व हर एक विभाग में आपको दिखाई देगा। राष्ट्र निर्माण के कार्य में जो भी समर्पित है, जो एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको स्थिरता पसंद नहीं है, जो कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते रहता है, वो नेता होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण आप सभी लोगों के लिए राहुल कराट जी हैं कि अपने नेतृत्व गुण से उन्होंने ये जो पौधा लगाया कि देश की जरूरत को समझ के कि क्या भविष्य में राजनीति में बदलाव होंगे और बदलते इस युग में भारत को आगे अगर बढ़ना है तो कैसे लोगों की आवश्यकता होगी जो इस देश में नेतृत्व करें, काम करें, लोगों के जीवन मान को बदले और उस दिशा में सोचना। और मैं ये समझता हूं कि ये उनके परिवार से ही आई हुई सोच है कि विश्वनाथ कराट जी ने भी जब सोचा था कि एक ऐसा स्कूल तैयार किया जाएगा, फिर उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया, आज उन्होंने जो विजन दी, मैं समझता हूं कि सब विजन इतनी बड़ी रखना और उसके ऊपर कार्य करना और उसको अंतिम तौर तक पहुंचाना, ये उनके परिवार में मैं समझता हूं कि एक तरह का आचरण है और उसी को राहुल कराट जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं। भारत के किसी भी कोने में अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं चुनाव होते हुए नजर आते हैं, वो पंचायत स्तर के हों या स्थानिक इकाई के हों, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो। लोकसभा के चुनाव अगर हुए हैं तो उपचुनाव होते हैं। सहकारिता एक क्षेत्र है, बहुत सारी अन्य इकाइयां काम करती रहती हैं और बहुत सारे लोग, जैसे आप SHG का अगर देखा जाए
तो हमारी बहनें काम करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, उनके माध्यम से चुनाव होते हैं। तो नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है पूरे देश भर में, और ये प्रक्रिया जब से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली तब से चली आ रही, और ये लोकतंत्र का बड़ा प्रवास रहा है, और इसको भी समझने की आवश्यकता आप सबको है। इसका कारण यह है कि ये प्रवास कोई सामान्य नहीं रहा। भारत और भारत के वासी हजारों वर्षों से एक फ्यूडल व्यवस्था को देख रहे हैं। इन्होंने राजाओं को देखा, महाराजाओं को देखा, नवाबों को देखा, बादशाही देखी, अंग्रेजों की हुकूमत देखी। लोकतंत्र क्या होता है ये किसी को मालूम नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी। तो भारत ने जब 1947 के बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाने की कोशिश शुरू की, तो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, आज बहुत सारा एक चर्चा होती है कि भारत अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है बहुत बड़ा, लेकिन उसका जो मूल है, उसका जो फाउंडेशन है, उसको भी हम लोगों को समझना होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की आबादी की 85% लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको लोकतंत्र क्या है ये जानकारी नहीं थी। अब जब जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी को बुलाया और कहा कि नहीं 1951 में बुलाया, तो बोला कि हम लोगों को इमीडिएटली अभी चुनाव लेना है। बोला नहीं 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 नहीं, ये चुनाव इमीडिएटली मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता। इस देश की भौगोलिक संरचना इतनी कठिन है, जटिल है, और उस वक्त में तो आप मतलब सोच सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग जंगल में रहते थे, गांव खेड़ों में, तो मतलब शहरों में अगर रास्ते नहीं होंगे तो गांव खेड़ों में कहाँ जा पाएंगे। तो मतदार सूची तैयार करना, बैलेट तैयार करना, आगे बढ़कर वहां वोटिंग करवा के लेना, ये बड़ी एक्सरसाइज थी। तो उसके लिए उन्होंने मतदार सूची का प्रबंधन शुरू किया कि अभी हम लोगों को तैयार करना होगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कहां से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रवास कितना बड़ा कठिन था, इसको समझने की आवश्यकता है कि जब उन्होंने मतदार सूची की प्रक्रिया शुरू की तो पहले उनके पास जब आए तो महिलाओं के नाम ही नहीं आ रहे, क्योंकि महिलाओं के नाम देने की हमारे यहां कोई रिवाज नहीं था। तो नाम आते थे सचिन सावंत की बहन, सचिन सावंत की बेटी, या राहुल कराड़ जी की बहन, इनकी बहू, महिलाओं को नाम नहीं था। तब उन्होंने भेज दिया, सुकुमार सिंह जी ने मतदार सूची वापस भेजी, नहीं नहीं हम महिलाओं के नाम आने चाहिए। और वो पूरी एक्सरसाइज के बाद पहले चुनाव की मतदार सूची में 17% से महिलाएं शामिल हो पाई, और उसको भी एक बड़ा अचीवमेंट माना गया था। आज के जो अभी लोकसभा में महिला सांसद हैं, उनका अगर प्रमाण आप देखें तो वो भी 17%। तो इसको हमको समझना होगा, ये जो प्रवास है इतना सहज साध्य नहीं था। उस वक्त की आजादी की परिस्थिति को भी हम लोग देखें कि जब आजादी मिली थी, शुरुआत में ही हम लोग भारत पाकिस्तान युद्ध में जाकर फंस गए थे। लगभग 20 लाख से ज्यादा निर्वासित इमिग्रेंट्स अन्य मतलब पाकिस्तान के यहाँ हमारे यहाँ आके बैठ गए थे। दंगे फसाद हो चुके थे, वो माहौल था। और जहां कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान देता है, हरियाणा हो, पंजाब हो, वो पूरी तरह से पीड़ित था। तो भारत की इतनी बड़ी आबादी को खिलाना, उसके ऊपर 20 लाख लोग आने के बाद एक बड़ी समस्या थी कि कितना अनाज कहां से हम लेके आए। तो हम लोग निर्भर थे अमेरिका के पास जाकर, रशिया के पास जाकर हाथ फैलाते थे। बहुत कठिन माहौल था। हमारी आर्थिक स्थिति, कोई जो शोषण हुआ था अंग्रेजों के माध्यम से, तो उस वक्त में अगर सही मायने में हम लोग खुशनसीब थे कि ऐसे विशालकाय व्यक्तिमत्व हमारा नेतृत्व कर रहे थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन की धरोहर से आए थे, मूल्यों से आए थे, महात्मा गांधी जी की सीख से, उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेतृत्व, देश हित में अपने आप को न्यौछावर करने वाले लोग देश के नेता बने थे, और उन्होंने वो बागडोर संभाली थी। और उसी वजह से जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमने देखा कि 1948 में ही हम लोगों ने एटॉमिक एनर्जी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। होमी बाबा जी को बुलाकर विक्रम साराभाई के माध्यम से उन्होंने स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम शुरू किया। IIT, IIM, एम्स जैसी संस्थाएं, शिक्षा क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। देखिए, हजारों वर्ष से जो अंधकार अज्ञान में हम लोग फंसे हुए थे, मनुवादी व्यवस्था में फंसे हुए थे, महिलाओं को शिक्षा नहीं थी,
इस देश का अगला मार्ग क्या होगा, तो वो विज्ञान का मार्ग होगा। ये दिशा हम लोगों ने दी, और उसी वजह से 27 साल में, इतने कम समय में, इतना गरीब देश जो अनाज के लिए जूझ रहा है, उसने एटॉमिक टेस्ट कर दी 1974 में। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आईटी की क्रांति इसी देश में हुई। इसी देश में ओपन अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम लोगों ने एक न्यू मिडिल क्लास तैयार कर दिया। राइट बेस्ड इकोनॉमी हम लेके आए। एक वक्त ऐसा था कि जब अमेरिका हम लोगों को ह्यूमिलेट करता था, आपको अनाज उगाना नहीं आता, क्योंकि हम लोग परंपरागत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे जो बापदादाओं से सिखाई गई थी, कोई यंत्र सामग्री नहीं थी। तो जब इंदिरा गांधी जी गई थी अमेरिका में, तो उस वक्त में वहां के अखबारों में ये आई थी कि भारत को किसानी करना नहीं आता, खेती करना नहीं आता, तो हम सिखाएंगे। तो इस तरह का ह्यूमिलेशन था। वही देश ने विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर करके अनाज का ये उपाधि हम लोगों ने पाई है, और 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त में खाना खिलाते। और हमने जो इकोनॉमी लाई, राइट बेस्ड इकोनॉमी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि चांद्रयान पर हम लोग पहुंचे हैं, और साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला देश कोई होगा तो भारत देश है। इसमें हम लोगों को बहुत आनंद आता है, बहुत ही फक्र महसूस होता है। भारत की एक प्रगति का एक बड़ा इतिहास रहा है, बहुत सारे विजनरी नेताओं ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन क्या ये पूरी है? क्योंकि आज भी इसका दूसरा अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हंगर इंडेक्स में हम लोग 107वें नंबर पर हैं विश्व में। आज 50 साल में सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में है। आज इस देश के गरीबी का स्तर बहुत ही नीचा है। हम लोग कहते हैं 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में देखें तो हमारा पायदान 27वें 28वें नंबर पर है। और ये सभी समस्याएं आपके सामने, और इसी वजह से 21वीं सदी का भारत का नेतृत्व करने के लिए एक सक्षम नेताओं की फौज हमें चाहिए होगी। ये आकलन देश के हर एक विभाग में, हर एक नेतागण में है। जब छात्र सांसद होती है तो आज गवर्नर भी यही कहते हैं, रमेश बैस जी ने भी वही कहा, नार्वेकर जी का भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था उस वक्त में। तो आपकी बहुत ही जरूरतें हैं, ऐसी लीडरशिप हमें आवश्यक है कि जिसके ग्लोबल विजन हो, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, देश के हित में क्या हो रहा है, देश के लिए विजन हो, अपने राज्य के लिए विजन हो, अपने कार्य क्षेत्र के लिए विजन हो, अपने गांव के लिए विजन हो, उसका एक विकास का मॉडल बने, और उस विकास के मॉडल में आप लोग काम कर पाए। इसके लिए एक ट्रेन फोर्स की भी आवश्यकता है। और आज मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा योगदान MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस का है कि एक थॉट प्रोसेस तो आपने चलाई और पूरे देश भर तक पहुंचाई। आज देश के बहुत सारे अन्य प्रॉब्लम है, बहुत सारे अन्य समस्या है। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र को मैंने जब कहा कि एक प्रवास था लोकतंत्र का, हर एक सरकार आती है, उसको लोकतंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता होती है। जनता और एक कदम आगे बढ़े, जनता के प्रति और कुछ अधिकार हम दे पाए, उनके हाथ में डेलीगेट कर पाए। उस वक्त में जब लोकतंत्र की शुरुआत हमने की थी तो ऊपरी स्तर पर बहुत बड़े बड़े नेता थे, लेकिन क्या हम लोग नीचे तक उसको परकोलेट कर पाए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 साल तक लोकतंत्र को कोशिश किया नीचे तक पहुंचाने का, एक जीवन की रीत बनाने का। लेकिन जब आज भी अगर ग्राम स्तर पर हम जाएं तो महिला सरपंच, हम लोगों ने महिला रिजर्वेशन बिल स्थानिक स्वराज्य संस्था में लाया, 50% हम लोगों ने दिया। लेकिन आज भी महिलाएं वहां जाके, आप पंचायत की सीरियल देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि पति को ही ग्राम प्रधान माना जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम हमको करना है। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए संवैधानिक अधिकारों को लोगों तक पहुंचाना, उनके अधिकारों के बारे में जागृति लाना। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि देश एक होता है तब आगे बढ़ते हैं। और ये वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में जो आइडियोलॉजी को आप आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि सभी धर्मों को, उनके विचारों को आगे करके, आपने वो जो डोम किया था कराट जी के, इसमें वारकरी संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में
विचारों को इस आगे बढ़ाने का था, प्रेम सद्भावना का विचार आगे बढ़ाने के लिए। कोई धर्म द्वेष तिरस्कार नहीं, नफरत नहीं सिखाता। और भगवत गीता के साथ में कराट जी का स्टैचू भी मैंने देखा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरंकार समदुःख सुख शमी ही। इसका मतलब क्या है? जो किसी का द्वेष नहीं करता, सर्व प्राणी मात्र से प्रेम करता है, जो सबका मित्र है, जिसके मन में करुणा है, जिसके मन में अहंकार नहीं है, निरंकार, जो सुख दुख को समान देखता है और सबका क्षमाशील है सबके साथ में, वो भक्त मुझे प्रिय है। और जो संदेश संतों ने दिया था, उसी तरह का संदेश। कौन संत होता है? संत कौन होता है? अभी आजकल योगी बाबा बहुत सारे दिखते हैं हम लोगों को। संत कौन होता है? भगवान कृष्ण ने वही कहा था, सर्वभूतस्थ आत्मा सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षन्ते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। इसका मतलब क्या है? सभी प्राणी मात्रों में, सभी प्राणी मतलब वैश्विक, जो ज्ञानेश्वर जी ने भी पसायदान पूरे विश्व के लिए मांगा, तो सर्व प्राणी मात्रों में मुझे देखता है, ईश्वर को देखता है, और ईश्वर में सभी प्राणी मात्रों को देखता है। वो योगी जिसका दृष्टिकोण सभी तरह से समान है, जिसके मन में कोई भी भेदभाव नहीं है, ऐसा योगी। तो आखिरकार मैं सिर्फ एक भगवान गौतम बुद्ध जी की कथा छोटी सी आपको बताना चाहता हूं, जो आपके जीवन को मार्ग देगी, जो मुझे भी इंस्पायर करती है, आप सभी को इंस्पायर करेगी। भगवान गौतम बुद्ध जी के शिष्य ने गौतम बुद्ध जी को पूछा कि जीवन का रहस्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति जीवन का रहस्य है क्या? क्योंकि बहुत सारे, अब जैसे हिंदू रिलीजन मोक्ष के बारे में बताता है, या अटेनिंग द मर्सी ऑफ गॉड। तो उन्होंने ये कहा था, देखिए हजारों वर्षों से हमने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास किए, ईश्वर किसी ने देखा नहीं। बहुत सारे जनरेशन उसमें चले गए। तो मैं वो दार्शनिक देते थे, वो बहुत सारे उदाहरण देते थे, उसमें से उदाहरण का एक बहुत बड़ा उनका एक समझाने का तरीका था। उन्होंने कहा कि सपोज एक कथा ऐसी है कि एक राजा जंगल में गया था शिकार करने के लिए, और वो शिकार करने के लिए जा रहा था, उसी में कोई से एक तीर आया और उसको लग गया, वो घायल हो गया, नीचे गिर गया राजा, पूरी तरह से घायल है, खून निकल रहा है। ऐसे वक्त में आप क्या करोगे? राजा कह रहा है कि जाके उसको ढूंढो जिसने मारा था। क्या आप उसको बचाओगे या ढूंढने जाओगे? सब लोगों ने कहा, क्योंकि वो उत्तर वही देते थे, जनता मतलब वो सवाल ही ऐसा पूछते थे कि जवाब उन्हीं से आए। कहते थे नहीं, मुझे राजा को बचाना पड़ेगा। तो वही उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष प्रयास किए गए, लेकिन इस विश्व में आज भी गरीबी है, असहायता है, शोषण है। अगर आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो जीवन का आपका हेतु साध्य होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस सभी के माध्यम से इस देश की सेवा होगी। ऐसे रत्न भविष्य में भारत के निर्माण के लिए लगेंगे। मैं आपकी सभी भविष्य के अच्छे काल की प्रार्थना करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Thank you for guiding our students. Next, we have a renowned personality, Honorable Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Assembly, Shri B.Gdeshmukh. I request my technical team to show his work and journey. He is one of the most important leaders and administrators in current Indian National Congress. Shri B.Gdeshmukh is the leader of the opposition in the Maharashtra Assembly. He is a former cabinet minister of other backward class welfare, disaster management, relief and rehabilitation in the government of Maharashtra, India. He is a prominent and stronghold leader from the Indian National Congress Party. He is also one of the most influential leaders of Indian National Congress Maharashtra, with strong public support from his home ground in Naxalite-infected area of Chandrapur and Gadchiroli. He formerly represented Shiv Sena. Then, in 2009 elections,
he contested on Indian National Congress ticket and won with a majority of more than 50,000 votes from Chimur Legislative Constituency. We warmly welcome Shri Vijay Wadetiwar. MIT स्कूल के अंडर या संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ कराड जी और हमारे हाउस के सम्माननीय अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी और MIT के नए अध्यक्ष और विश्वस्त हमारे जिनके आग्रह पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, राहुल जी कराड, हमारे साथी सचिन सावंत जी, डॉक्टर परिमल सुधाकर जी, डायरेक्टर रिसर्च NLC, श्रीधर परब शेट्टी जी, डायरेक्टर MIT, या मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित मेरे भारत का भविष्य जिनके हाथ में भविष्य में आने वाला है और उसकी तैयारी के लिए यहाँ उपस्थित है सभी मेरे युवा साथी और भाइयों, बहुत खुशी हुई कि मुझे यहाँ हमारे ये मास्टर इन पॉलिटिकल लीडरशिप के इस प्रोग्राम में हमारे MIT के संस्थापक जी राहुल जी ने मुझे आग्रह किया और जहाँ पे इस भारत का भविष्य बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास जिनके हाथ में है उसको बनाने का काम राहुल जी आपने किया, इसीलिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस ये मेरा तो बचपन से ही, मेरे फादर एक गांव के सरपंच थे और 10 साल सरपंच करके गांव में उन्होंने राजनीति की, तो मैं बहुत छोटा था, लगता है कि मैं 4th क्लास में पढ़ता था और पॉलिटिक्स में ही मेरे फादर का डेथ हो गया। उनको पॉलिटिक्स में उस वक्त जहर पिलाया गया था और मुझे तो कुछ समझ नहीं थी और हमने अपना गांव छोड़कर हम मेरे मदर के बड़ी बहन थी उसके पास में पढ़ने के लिए मैं गया गढ़चिरौली, और मेरा बाकी 12th तक का एजुकेशन गढ़चिरौली में हुआ। मैं शुरुआत में अनएम्प्लॉयमेंट के एक संगठन का काम करता था, क्योंकि वहां गढ़चिरौली में नक्सल मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, 100% ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था और उस वक्त ट्राइबल को अपना अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग के कोई साधन नहीं थे और वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट था कि 2-3 स्टेट से बाउंड्री पे वो डिस्ट्रिक्ट था, बहुत पिछड़ा हुआ था। जब कोई एम्प्लॉयमेंट की प्रिंट मीडिया में थोड़ी जाहिरात होती थी तब वो मैं उसको पेपर से काट कर साइकिल से जाके ऐसे 10 पार्ट मैंने चुना था कि जहाँ पे एक बोर्ड लगाकर उसके ऊपर में पेपर का, न्यूज़पेपर का कटिंग वो ट्राइबल बच्चों के लिए मालूमात हो और वो मालूम हो और वो अपना प्रयास करें, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए प्रयास करें। इसकी वजह यह थी कि पोस्ट कार्ड से ही उसको इंटरव्यू कॉल जाता था, पोस्ट से, और इंटरव्यू होने के बाद में उसको पोस्ट कार्ड मिलता था। या ये बहुत दिक्कत की बात थी। तब मुझे नक्सलाइट ने तब ये थोड़ा हिंट्स भी दिया था कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि वो थोड़ा उसके मूवमेंट के खिलाफ में थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने शुरू किया, NSI से मैंने शुरू किया राजनीति, और आज
एक गढ़चिरौली जैसे पिछड़े इलाके का एक आदमी यहाँ पे महाराष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन के चेयर पर बैठा है, तो आप समझ सकते हैं कि लीडरशिप, नेता क्या होता है। नेता, मेरे ख्याल से आप जो सोचते हो कि एक इंसान 100 कदम आगे बढ़ता है, वो नेता नहीं होता है। नेता वही होता है 100 लोग उसके साथ में जाते हो और 100 कदम उसके साथ चलते हो, तब वो नेता होता है। तो आपने, राहुल जी, आपने तो प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां सब बनाते हैं कोई चीजें के लिए, पर यह हिंदुस्तान के कल के नींव के लिए, कल के भविष्य के लिए जो आज आपने ये नींव रखी है, मुझे लगता है कि भारत, बलश्रेष्ठ भारत होने के लिए आपका योगदान निश्चित रूप से ये काम में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कानून, ये देश 3 स्तंभ होते हैं, चौथा तो है, हम उसका मैं बात नहीं करूंगा। सरकार एक होता है, सरकार के बाद सरकार को अगर कुछ करना है या सरकार को नया कुछ करना है तो उसके लिए कानून बनानी पड़ती है, और कानून की चर्चा हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में होती है। अगर वो कानून सही है, जनता के हित के लिए है, तो हम हाँ बोल देते हैं, तो अध्यक्ष जी पास बोलते हैं, सब एक मत, मतलब सबका। अगर उसमें कुछ हमें लगता है कि नहीं, ये जनता के हित का नहीं है, तब हमारा काम शुरू होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। आपके बहुत सारे स्टेट से आप लोग आए हो कि भविष्य में आप राजनीति की शुरुआत जो करोगे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श सामने रखकर करिए। सही मायने से जिन्होंने इस देश में राजा होते भी डेमोक्रेसी की पहली नींव इस देश में पहला किसने रखा होगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए दुनिया में भी, पूरे वर्ल्ड में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़े पैमाने में लिया जाता है, उनका आदर्श लिया जाता है। सवाल यही आता है कि राजनीति करना आसान है क्या? आप लोग तो सर्विस वाले है ही नहीं, यहां कोई पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए नहीं आए, माँ बाप के ख्वाब पूरे करने के लिए आप लोग नहीं आए। मुझे नहीं कैसे लगता है कि आप, राहुल जी, मैं कभी सोचता हूं आपको ये आइडिया कैसे आई। मैं कभी कभी सोचता हूं तो ये राहुल जी की आइडिया सबसे अलग कैसी होती है। तो ये दोनों राहुल जी यहां बैठे हैं और तीसरे राहुल जी वहां भी बैठे हैं। अब आपने, मैं बोलना ही नहीं चाहता था, आपने बोल दिया। राहुल के नाम के आदमी में हुनर होता है और अलग होता है, ये पहचान है। तो मैं सोचा कि ये देखिए, कोई माँ बाप की ख्वाब पूरे करने के लिए, मदर फादर की अपनी जो कुछ इच्छा होती कि नहीं मैं सर्विस करूंगा, ये मेरा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, अपने डॉक्टर होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, जो भी उनकी अपेक्षाएं होती है। पर ऐसे कोई आज के जनरेशन में फादर और मदर की अपेक्षा नहीं होती कि मेरा बच्चा पॉलिटिशियन बने। और जो हिम्मत आपने बताई, ये देश दुनिया में मजबूत करने के लिए बनाया है, ये मैं गर्व के साथ कहूंगा, ये मैं गर्व के साथ कहूंगा। कितनी भाषाएं, कितनी प्रांत, कितने सारे प्रांत, इसको एक मुट्ठी में मजबूती से किसने बना के रखा है, तो अपने ही देश के संविधान में बना के रखा। जब तक ये संविधान मजबूत है, इस देश की डेमोक्रेसी मजबूत, इस देश का लोकतंत्र मजबूत। और आपसे यही अपेक्षा है हमारी। ये मेरे ख्याल से आज 19 बैच निकल चुके हैं। आपने कहा था कि 6 MLA आपने आपके प्रोडक्शन से तैयार हुए, और आप हर प्रांत से आए। मुझे कोई नागालैंड का दिखा, कोई बिहार, कोई यूपी। मैं राजनीति में पिछले 6 टर्म से MLA हूं,
और नॉन स्टॉप, कभी ब्रेक नहीं हुआ। आपको अच्छा वक्ता होना पहले ही जरूरी है। राहुल जी क्वालिफाइड है गांधी, पर वक्ता अच्छा नहीं है। तो आपको पहले वक्ता अच्छा होना चाहिए। कुछ भी अगर पब्लिक के सामने आप बात करोगे तो एग्जाम्पल के तौर बात करना चाहिए। मैं जब से सुना रहा था कि राहुल जी नार्वेकर साहब यहाँ हैं, कि मैं एग्जाम्पल दूं क्या, नहीं, मैं हमेशा अलग अलग एग्जाम्पल देते रहा हूँ। आज के हमारी भी सरकार 3 पार्टी की थी तभी, राहुल जी आप तो नहीं है, अभी भी 3 पार्टी की सरकार है, पार्टियां वही है, थोड़े बदल गए हैं। तो ये चलता है, ये लोकशाही, ये डेमोक्रेसी में तो ये होना है, जिसके हाथ में संख्या बल है वही कुर्सी पर बैठता है, और वो फिर आगे की बात अलग है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वो कुछ मराठी बच्चे भी हैं यहाँ पे, वो हिंदी में कोशिश करता हूँ बताने की, या बताऊँ या नहीं बताऊँ, सोच रहा था मैं आज की राजनीति के बारे में। हम लोग बहुत अलग मोड पर हैं, चाहे कोई भी हो। देखिए, आप युवा हो, पहले जो हम लोग हमारी राजनीति स्टार्ट किए थे, तो मुझे याद है मैं बुलेट कार से हम लोग प्रचार करते थे, और उस वक्त वही बैलगाड़ी को लाउडस्पीकर बांधकर हम लोग गाड़ी में बैठते थे और अनाउंसमेंट करते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सच को झूठ, झूठ को सच, जितना वायरल होगा लोग सच समझना शुरू करेंगे। जमाने में बदल हुआ है। आपको घर में आपकी तकलीफ कम हुई है। इस देश की आजादी के बाद इस देश में जितने गांव थे उसमें से 78-90% गांव में रास्ता ही नहीं था, जाने के लिए तकलीफ थी। आज तो आप इस भव्य से, जिनके लगन से, विश्वनाथ जी कराड़ साहब के क्या लगन हो गई, गांव से आए हुए कराड़ साहब, एक छोटे से गांव से, जो आज 5 यूनिवर्सिटी बनाकर जो ये विश्व खड़ा किया है, तो वो लगन है, वो जिद है। हमारे गांव में भी ऐसे ही एक इंसान, एक लड़का था, छोटा सा लड़का था, वो तो 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता था, और उसका बाप, फादर जो था, फादर वो गाय चराने का काम करता था, गैया चराने का काम। एक दिन वो बीमार हुआ और बच्चे को बोला कि जो मेरे गाय है, जानवर है, उसको जरा आप जंगल की दिशा में लेके जाओ, चरा कर शाम को वापस ले आओ। उसने ले गया, और जाते वापस आते वक्त शाम हो गई। तो वापस आते वक्त उसने सोचा कि चलो बाबा, मेरे फादर ने तो बोला है कि लेके जाओ, तो उसने आते वक्त गिन लिया, एक गाय उसमें कम थी। तो बच्चे को लगा कि जाने के बाद में गाय का मालिक भी मारेगा और फादर की भी डांट पड़ेगी। तो उसने सोचा कि सब तो गाय को, जानवरों को गांव की तरफ हकेल दिया, और वो फिर ढूंढने के लिए, शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, वो गाय उसको ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल गया। रहा था, उसको दूर से वो गाय दिखी। जैसे ही दिखी, 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा स्पीड से दौड़ना शुरू किया। बोले दिख गई उसको गाय, स्पीड से दौड़ना शुरू किया। एक छोटा नाला था, वो सोचा नहीं, दौड़ा और नाले को पार करके उस पार गया, गाय को पकड़ लिया। उसी रास्ते से एक टीचर जा रहा था, उसको लगा कि ये बच्चा छोटा सा है, इतनी जम कैसी लगा ली, ये कैसे पॉसिबल है। उसने बच्चे को नजदीक बुलाया, गाय को पकड़ कर ला रहा था, तो बोला बेटा तूने तो गाय तो पकड़ लिया, जम मार ली, मुझे मेरा विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाला को कैसे आपने क्रॉस किया, कैसे जंप लिया। मैं आपको 100 रुपए देता हूं, फिर से इसका प्रयास करो। तो बच्चों को लगा गाय तो मिल गई भाई, 100 रुपए ऊपर से मिल रहे हैं। पीछे दौड़ा, पीछे आया, स्पीड बढ़ाई, दौड़ना शुरू किया। जैसे ही जंप करने गया वो इस नाले में गिरा। तो टीचर ने उठाया, उसको थोड़ा सा लगा था, बोला बेटा आपने गाय को पकड़ते वक्त जंप लगाई और मैंने तो 100 रुपए दिया, फिर भी आप नाले में गिर गए। वो बच्चे ने कहा गाय ये मेरा नजर के सामने थी, ये मेरा ध्येय था, ये इसको पकड़ना मेरा टारगेट था, और मैं जब मेरे टारगेट से हट गया
तो मैं नाले में गिर गया। तो आप कभी अपने टारगेट से बाजू मत जाओ, टारगेट करो कि ये मुझे मिलाना है, तो तब यू आर सक्सेस। आप अगर सोच में रहोगे कि मैं ये नहीं हो सकता, कोशिश करो। मेरी बच्ची भी पॉलिटिक्स में है, अभी वो आने वाली थी, मैंने उनको बुलाया था, उसने भी शिवानी वरिट्टीवार करके आप सर्च करोगे तो ये तो कर रही पॉलिटिक्स में, मैं उनको छूट दे दिया। ये पॉलिटिक्स में राहुल नार्वेकर साहेब आपल्याला थांबायला लागेल कुठेतरी आता। सगळेच काय 70-80 पर्यंत 90 पर्यंत जातात सर्च करणार, काही पिढीला येऊ दिलं पाहिजे। ही सगळी ट्रेनिंग घेऊन पिढी तयार होते आहे, म्हणून आम्ही थांबायचं ठरवलंय। सब तुम्ही पाहिलं तर माझं वय काही फार नाही आहे, पण थांबलं पाहिजे, रुकना चाहिए। राजकारण की यही खासियत है, राजनीति में किसी को नहीं लगता है कि मैं यंग ही हूं, ऐसा लगता है। तो आपको बच्चों में यही, आज आप यहाँ आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके साथ में ये निश्चित रूप से आपको 2-3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा राजनीति में अगर सक्सेस होना है। बहुत आज की राजनीति तो बहुत, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो महंगी भी हो चुकी है राजनीति। राजनीति में पैसा भी बहुत आया है, ये डर भी अपने आप को सताता है। मैं पहला राजनीति में पहले बार एमएलए हुआ तो 78,000 रुपीज लगे मुझे, आप सोच नहीं सकते अब कितने लगे, ये मत पूछना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो राजनीति ये भी नहीं है कि शुरुआत करो तो आज अच्छे लोगों को अपने आप रास्ता मिलता है। ये बदलेगा, ये दौर भी बदलेगा। जो आज राजनीति में है, पैसे की राजनीति, झूठों की राजनीति, हमारे आज आपस में हम लोग मिल रहे, तो इसलिए आपको आर्थिक स्तर पर, सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इस देश की इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोर्स कर ध्यान देना पड़ेगा। और ये इसके साथ में भी आपको जात पात धर्म पंथ की ओर, इससे बढ़कर सबको जोड़ने की राजनीति करनी पड़ेगी। नफरत की राजनीति में आप कभी मत आगे हो। इंसान को इंसान से जोड़ने की राजनीति आप करो तो आपके जीवन में एक ना एक दिन आप सक्सेस होगी, इसकी आवश्यकता है। नफरत की राजनीति आपको कुछ समय के लिए बहुत आनंद देगी। हम अपने घर के सामने किस जाति का, किस धर्म का इंसान रहता है, ये सोचकर मत आगे बढ़ो। हम इंसान हैं, मैं कोई डिग्री नहीं लिया हूं। मैंने राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो थे हमारे, आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ो आप, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को पढ़ो, जो एक संत करके थे, ये विदर्भ के भूमि से आते हैं। कभी आप महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ो, जिन्होंने शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ाया। कभी आप संत गाडगे बाबा को पढ़ो, शिक्षा का महत्व उन्होंने बताया। ये भूमि जहां पे आप पढ़ रहे हो, इस भूमि के संत तुकाराम महाराज को पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि आप की राजनीति किस ओर जाना चाहिए। तो नेता के बारे में मैंने कहा था कि नेता छत्रपति शिवाजी महाराज का आपको नाम दिया था। आपके बाजू में जिसका नाम कोंडाणा किला था, आप पुणे में पढ़ते हो, कोंढाणा, जिसका नाम अभी सिंहगढ़ है, तो वो कोंढाणे की हिस्ट्री को थोड़ा सा आप पढ़ो कि राजा क्या होता है। पहले मैं बोला था कि डेमोक्रेसी की पहली नींव किसने रखी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। तो वो राजा को आप सामने रखो, जो थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ो। थोड़ा भाषण ज्यादा आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर आपको एक बताता हूं, बहुत मेहनत राजनीति में करनी पड़ती है। ये 24/7 का काम है। ये राजनीति नौकरी में 10 से 5 का काम नहीं है। रात में 12 बजे भी आपको फोन आता है तो फोन कॉल रिसीव करना पड़ता है। पहले तो लैंडलाइन होती थी, आज तो मोबाइल आया है। नहीं उठाया 2 बार तो तीसरे बार वो आदमी सुना देता है, आपने तो हमारा फोन ही नहीं लिया, आओ दोबारा वोट मांगने के लिए। तो राजनीति में सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए, जो नौकरी में नहीं चाहिए। आप गुस्सा कर सकते हैं, यहां गुस्सा करोगे तो आपका वोट खराब होगा।
और आप जैसे युवाओं की जो जिसमें आप कितना भी बोले, दुनिया की स्टडी करो आप, तो आप हमारी डेमोक्रेसी जो आज मजबूती से खड़ी है, वो हमारे संविधान निर्माता श्रेय जब जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया। इसीलिए हम और आप मिलकर, हमें तो राहुल जी सही में आपने तो ये शुरू करके हमारे कॉम्पिटिटर को, सही बोल रहा हूं मैं, कॉम्पिटिटर ही बढ़ा दिया है। हमारी राजनीति कैसी होती थी और आज ये इनकी राजनीति, अगर ये आएंगे तो स्पर्धा कितनी बढ़ेगी। और बढ़ने दो, कंपटीशन ये अच्छा ही देता है। और आप लोग, आप सब यहाँ पर जो 2 साल के बीच बाहर निकलोगे तो अपने अपने राज्य में जाकर यूनियन में, मेरे पास अभी, मैं राजनीति के साथ साथ जो लेबर यूनियन है, करीबन मेरे पास में अभी 40,000 लेबर का यूनियन है और हर इंडस्ट्री में मेरे डिस्ट्रिक्ट में उसका लीडर मैं होता हूँ। तो एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। ये ताकत के साथ उनको न्याय देना, उनके हक को दिलाना, जब आप अपने आप में ये सिद्ध करोगे कि मुझे ये मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए लड़ना है, तो आप लीडर जरूर बनोगे। आप अपने बारे में सोचोगे तो आप लीडर नहीं बनोगे। आपको समाज के बारे में, देश के बारे में सोचना है, तो सोचो और अच्छे लीडर बनकर इस देश को आगे बढ़ाओ। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं और मैं आपकी रजा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you very much indeed for your words of wisdom. I'm sure the way beautifully you have guided our students, it will help them long way in their lives and their careers. Thank you very much. My friends, as you can see, we have now 2 stalwarts on the stage. I would request Revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir, Shri Rahul Karat sir, to kindly felicitate and welcome Ullasada Pawar sahib. It is indeed our honor and privilege to have you here today, sir. Thank you very much for taking time out and being here today with us. A big round of applause, my friends, for Shri Ullasada Pawar. Thank you, sir. Thank you very much. We also have on stage the national spokesperson of All India Trinamool Congress and former member of Parliament Rajya Sabha, the special guest of honor, Madam Sushmita Devji. I request her to kindly felicitate and welcome her as well. Rahul Narvekar ji also joining the felicitation. Such a beautiful sight that the leaders across the party lines are coming together for the benefit of students and the generation. A big round of applause, my friends. Thank you very much, sir. With this, I would like to request my technical team if they can please relay a small film made on life and work of our special guest of honor, Madam Sushmita Devji. She is one of the most respected leaders of the Trinamool Congress Party. Ms. Sushmita Dev is the former member of Rajya Sabha from West Bengal and belongs to the All India Trinamool Congress. She currently serves as the national spokesperson of the All India Trinamool Congress. She holds an LLB, Corporate and Commercial Laws from UK, and she enrolled at Inns of Court School of Law, London and King's College London, UK. Previously, she was elected to the Lok Sabha from Silchar, Assam in 2011 and 2014 Indian general election as a member of the Indian National Congress. She is the former president of All India Mahila Congress. She was also appointed as the Rajya Sabha member from West Bengal, backed by the All India Trinamool Congress on October 4, 2021. In April 2018, she was designated as a member of the Central Advisory Commitment
for the National Cadet Corps. We warmly welcome Miss Sushmita Dev. Madam Sushmita Dev ji. I'll be less than that, believe me. Good afternoon, everybody. I would like to start by thanking Rahul Karatji for giving me the opportunity to come here and speak to so many young people. My father used to say that the toughest audience is when there are young people in the audience. क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं या थोड़ा matured होते हैं, they don't ask so many questions, they don't think as fast as young people think. But I'm absolutely honored to be here. I would pay my respects to Professor Dr. Vishwanath Karatji. He is very revered, very well known for many reasons of social service and as an educationist. I take great honor in being in his presence and being able to speak. The Honorable Speaker of the Legislative Assembly, who have known for a while, I'm also very happy to share the stage with him, Rahul Narvarkar ji. We have with us the leader of the opposition, जो मेरे पहले भाषण दे रहे थे, बहुत ही जुझारू नेता हैं वो, और आपके साथ इस मंच पर मुझे बैठने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद. We also have on stage with us Ullas Pawarji, a senior politician, much revered, and we have Shishidhar Pabishetty and Dr. Parimal Maya Sudhakar, who are part of the Director External Affairs and Director Research. And all my young friends here, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा हिंदी में बोलूँ और थोड़ा इंग्लिश में बोलूँ. My mother tongue is Bangla. So, you know, हमको strilling और pulling में थोड़ा confusion हो जाता है. We mix up the gender because Bengalis can never say train आती है कि आता है. But I'll try my best to speak in English and in Hindi. First of all, I congratulate all the members of the 19th batch who have decided that you're going to join politics, and if not join politics, at least be associated with politics in one way or the other. बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स पेशा नहीं होता. पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्रोफेशन. तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं जवाब में हमेशा कहती हूँ कि पेशे से मैं वकील हूँ, पर फिलहाल मैं राजनीति में हूँ. सो the first thing that you have to realize is politics is not a profession. Politics is service to the nation. Politics is service to the people. That's why that should be the only reason you come into politics. और मैं ये भी कहने की हिम्मत करती हूँ, मैं बहुत ध्यान से देख रही थी मास्टर्स इन पॉलिटिकल लीडरशिप इन गवर्नमेंट, जो 2 साल का कोर्स है, उसमें क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं. एंड आई हैव टू से इट इज़ अ वेरी 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 वेल प्लान्ड मॉड्यूल. एक अगर कोई एमपी बन जाए, कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई काउंसलर बन जाए या पंचायती राज में जीत के आए, तो उनको किन चीज़ों से किन चीज़ों से उनको काम करना पड़ेगा, वो सब चीज़ मॉड्यूल में है. पर एक चीज़ मैं आपको फिर भी बताती हूँ, आप मत सोचना कि आपकी एनुअल फी बेकार गई.
पर मैं ये जरूर कहूंगी कि राजनीति आपको कोई भी नहीं सिखा सकता. नो वन कैन टीच यू पॉलिटिक्स. सो यहां से जब आप 2 साल बाद पढ़ के निकलेंगे, आप किसके लिए तैयार है? संगठन के काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे. आप किसी पार्टी के अंदर किसी पद के लिए शायद आपकी तैयारी हो जाएगी. और अगर आप सांसद या विधायक या काउंसलर या जिला परिषद बन गए तो आपको पता होगा कि किस तरह का काम मुझे करना है. दे विल ट्रेन यू फॉर दैट. पर ये जितने भी पदों का मैं नाम ले रही हूँ, सांसद, विधायक, पंचायत, यहां तक पहुंचने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो आपको सिर्फ आप सिखा सकता है, आपको कोई और नहीं सिखा पाएगा. ये बिल्कुल तय है. अब मैं अपना उदाहरण लेती हूँ. मेरे पिताजी राजनीति में थे, केंद्रीय मंत्री थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर थे. मेरे दादा एमएलए थे. ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज, अपने प्रदेश में वो हेल्थ मिनिस्टर थे. पर मैं ये भी कहती हूँ कि मेरी मदर वॉज एन एमएलए. पर जब से मैं राजनीति में आई और मैं स्टूडेंट लाइफ से राजनीति में हूँ, आई डोंट थिंक माई फादर, माई मदर और माई ग्रैंडफादर could prepare me for politics because of what goes on and the way politics proceeds in everyone's life. So prepare yourself for a journey that no one can prepare you for. पहली बात तो ये है. Second, last but not the least, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे थे, your starting point is the constitution. If you don't know your constitution, you cannot understand the way politics works in this country. हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हम कहते हैं ना हम नेता हैं, हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. वो अधिकार कहाँ से आता है? संविधान से आता है. पर संविधान के अंदर भी कई तरह के अधिकार हैं. कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, कुछ ऐसे अधिकार है जिनको छीना भी जा सकता है. You see, डेमोक्रेसी, संविधान के आप लोग सुनते होंगे संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है. ये जब भाषण में आप ऑपोजिशन लीडर्स के यहाँ से सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, दे ऑल हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. और जब लेजिस्लेटर जुडिशरी को बताना शुरू कर देता है कि आपने कोर्ट में क्या बोलना है, और जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को बोलना शुरू कर देना कि आप क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. सो यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन. You must know your constitution. That's how you know your rights, and that's how you know how is it that what is federalism? What are the powers of the state? What are the powers of the government of India? So all these things you will find in the constitution, which I am sure you people will learn. एक सवाल राजनीति का हर छात्र पूछता है, how do I enter politics? कि मैं पॉलिटिक्स में एंटर कैसे करूं, मुझे मौका कौन देगा? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ. That when I fought my election, I first fought municipal elections, then I fought MLA elections, then I fought Lok Sabha elections, and I was fortunate to be a member of the Rajya Sabha for a short period. And I will tell you from all this experience, जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो चुनाव जीत के आए हैं, आप उनसे भी पूछ के देखिए, अल्टीमेटली जब चुनाव का टाइम आता है और वोट्स की जरूरत पड़ती है, हम लोग कहाँ जाते हैं? हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पीछे सपोर्ट है. कौन लोग हैं वो? वी गो एंड मीट ऑल द प्रोमिनेंट NGOs, जो NGOs चलाते हैं कि हमें आप सपोर्ट कीजिए, आपके पीछे 300 लोग हैं, आपने इतना सोशल सर्विस किया है महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, आपके पीछे इतने लोग हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम जीतने से आपकी मदद करेंगे. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, इफ यू वांट टू एंटर पॉलिटिक्स,
You have to find a way to do some sort of a public service. जिसके पीछे जनता है उसी के पास सत्ता आती है, और जिसके पीछे जनता नहीं है उसके साथ सत्ता कभी नहीं आ सकती, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो. So if you, after coming out of the college, if you think Congress party or BJP or Shiv Sena or Trinamool Congress will welcome you to say please आ जाइए हमारे पार्टी में और हम आपको मौका देंगे, ये कभी नहीं होगा, भूल जाइए. पर आपका जहां स्टेट है, आपका क्षेत्र जहां है, आपका गांव जहां है, आपकी म्यूनिसिपैलिटी जहां है, आप वहीं से काम शुरू करिए. क्या काम शुरू कीजिए? दैट you start serving the people. You can do health camps. You can help people fight for their rights. एक आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप देखिए ना, आप कोई भी न्यूज़पेपर में, अभी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रही थी फ्लाइट में, पेपर खोलने से ही कोई राज्य सरकार या भारत सरकार आपको वही बता रहा है कि हमने ये स्कीम दिया, हमने वो दिया, हमने महिलाओं को ये दिया, हमने पानी के लिए ये क्या, हमने हेल्थ के लिए. मतलब पहले 3 पेज हर न्यूज़पेपर में आपको बता रहा है कि कौन सी सरकार ने क्या काम किया. पर आप किसी गांव में जाइए, किसी भी प्रदेश के एक छोटे से गांव में जाइए, उसको मालूम ही नहीं कि क्या स्कीम्स हैं, कि मैं हेल्थ के लिए क्या कर सकती, मुझे हेल्थ फैसिलिटीज क्या मिल सकती हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज क्या मिल सकती हैं. सो one way of getting into politics is go there and help the people to understand what are the policies of the government, what are the schemes of the government. Okay, how can you help those people? So schemes यहाँ होते हैं और वहाँ होते हैं, तो उनको एक साथ जोड़ना भी एक बहुत बड़ा काम है. So the only way you will succeed as a politician is if you have people's support. आज एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मुझे पता नहीं how much time do I have left? A couple of minutes. Okay, so one thing I want to tell you, politics is very competitive. So आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, अगर आपने किसी बैंक में नौकरी की या अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी की, सो इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट. मतलब अगर 3 साल आपने खूब मेहनत की, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो आपको आपकी तरक्की उस कंपनी, उस बैंक में होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा. पर एक चीज आप लोग समझ लीजिए, पॉलिटिक्स में चाहे आप दिन रात एक कर लें, चाहे आप अपनी पूरा टाइम उसमें लगा दे, अपना जीवन उसमें निछावर कर ले, कोई गारंटी नहीं है दैट इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. आप समझ रहे हैं? आप केपेबल हो सकते हैं, आप सक्षम हो सकते हैं, आप 24 घंटा काम कर सकते हैं, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उसका फल आपको पॉलिटिक्स में मिलेगा. ये पॉलिटिक्स की स्ट्रगल है. सो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के जा सकती थी, मैं आपको जैसे हम बोलते हैं ज्ञान दे सकती थी, बट आई विल टेल यू समथिंग. अगर पॉलिटिक्स में आप आगे निकल गए, अगर आपने कुछ कर दिखाया, तो पॉलिटिक्स से बेहतर कोई देश सेवा नहीं है और कोई जन सेवा नहीं है, ये बात भी तय है. सो प्रिपेयर योरसेल्व्स. और मैं चाहूंगी कि आप में से बड़े सारे लोग, बड़े सारे स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगी भविष्य में विधानसभा में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे, जिला परिषद में बैठे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई मस्ट टेल यू, चाहे कोई कुछ भी बोले, आइडियोलॉजी मैटर्स. देखिए, देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी एमएलए हो, कोई 10 ब्रिज बनाता है, कोई 8 ब्रिज बनाता है, कोई 8000 किलोमीटर रोड बनाता है, कोई 7000 किलोमीटर रोड. काम मोटा मोटी देश निर्माण का सब ज्यादा या कम करते हैं, पर किस चीज पे आप विश्वास रखते हैं वो अंतर होता है एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच. टुडे बीजेपी बिल्ट रोड्स, कांग्रेस बिल्ट रोड्स. Today, BJD in Odisha is building roads and Trinamool Congress in West Bengal is also building roads. कोई कम बना रहा है, कोई ज्यादा बना रहा है, पर
आप यहां से निकल के कौन से पार्टी में जाएंगे, आपका वो आइडियोलॉजी आपको तय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हर पार्टी की आइडियोलॉजी को समझिए, क्योंकि आइडियोलॉजी क्या होता है? कॉन्शियंस होता है, कॉन्शियंस होता है। आई डोंट नो हिंदी में कॉन्शियंस को कहते हैं, बंगाली में विवेक कहते हैं। कॉन्शियंस, योर कॉन्शियंस मस्ट बी क्लियर, एंड इफ योर कॉन्शियंस इज नॉट क्लियर, then you can be a politician. I'm not saying you can't be a politician if your conscience is not clear, but at least I would not like to see you in that category of politicians where your conscience is not clear. So ideology को समझिए, ideology को पढ़िए, उसके बाद तय कीजिए कि आप कौन से पार्टी में जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे there are a lot of girls here, I can see a lot of women here who are going to study this course. See, what are the two things that keep women away from politics? One is violence, okay, and two is money. कि पैसा कहाँ से आएगा? Correct. These are the two things. Parents से नहीं राजनीति में नहीं जाना. So I will tell you something. You can go to any walk of life. The same difficulty that you have to become an engineer or in a private company, politics में उतनी ही obstacles है, कोई ज़्यादा नहीं है. So हौसला बुलंद रखो and carry on, and I wish all of you all the very best. Thank you. Thank you very much, Madam Sushmita Devji, and thank you very much for that words of wisdom, that hosla buland rakho. I'm sure that we all will take this message in our hearts. Thank you very much, ma'am. My friends, before we embark upon the next segment of our program, let us take a moment to reflect upon the remarkable movement that resonates deeply with the essence of leadership and the values that we hold dear at MIT School of Government. The National Legislators Conference Bharat, or NLC Bharat, stands as a shining testament to the power of democracy and dedication of the elected representatives of the ideals of good governance and unity. This conference is more than just gathering of lawmakers. It is a democracy carnival that showcases the very heart of India's democratic spirit to the world. Initiated by MIT School of Government, this conference has made possible through the collaboration and efforts from the speakers of Lok Sabha, incumbent speakers of state legislative assemblies, and chairpersons of state legislative councils. Their commitment to fostering democratic values and promoting unity in diversity is truly, truly commendable. Ladies and gentlemen, I invite you to now turn your attention to the screens as we do a small journey into the heart of the National Legislators Conference Bharat through a small film. Anything you desire for the welfare of a person, this constitution paves a way for you to achieve your goal. जो आप सभी
विधायकों की अपेक्षा थी एक व्यूज़ शेयर करना, डाइवर्स व्यूज़ को सुनना और उन्हें जाकर अपने अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना। मैं समझता हूँ ये राहुल कराट जी के इनिशिएटिव से निश्चित रूप से पूरी हुई है। मुझे अच्छा लगा जब राहुल जी ने, अलग अलग विधायकों ने जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नई प्रैक्टिस अपनाई, उनका परिदृश्य, उनकी प्रदर्शनी मैंने देखी है। Undoubtedly, India is now being recognized and respected worldwide. These themes of your conference are vital strands of the work to enhance the effectiveness of all democratic legislatures. इस मंच पर की गई चर्चाओं और नए विचारों से जनता की भलाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। फॉर द सेकेंड नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस आप गोवा में आने के लिए तैयार हैं? भैया तैयार है क्या? Whatever was said in India about thousands of years back is now being revealed by the entire world. देश भर से हिस्सा ले रहे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों अनंत शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी। हमारे मंच के ऊपर सभी विधानसभा के स्पीकर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका मन से आभारी हूं। मैं बहुत इमोशनल भी आज हो गया। Thank you very much. My friends, Mr. Rahul V. Karat, the visionary behind the National Legislators Conference Bharat, deserves our heartfelt admiration and praise. His unwavering commitment to transforming the leadership, democracy, and the positive change is nothing short of inspirational. Mr. Karat's dedication in providing political training to aspiring leaders, the young politicians through MIT School of Government, and his instrumental role in organizing National Legislators Conference Bharat showcases his profound understanding of the importance of democratic values, unity, and good governance. His vision and tireless efforts have not only transformed the landscape of leadership education in India, but has also brought together the lawmakers and the leaders from diverse backgrounds to collectively work towards the brighter and unique equitable future. My friends, the Speaker of Lok Sabha, the Speaker of Assemblies, and the leaders of opposition in the Assembly are coming together on the same platform today itself shows the non-partisan work of Sri Rahul V. Karat. My friends, we have created a very, very small moment, I would say a surprise for Sri Rahul V. Karat. I'm sorry, it is not disclosed to you beforehand. But we, the staff, teachers, alumni, and the students, and everyone here at MIT World Peace University would like to do something for you, sir, and for which I would like to invite on stage Dr. Parimal Maya Sudhakarji. Dr. Gautam. Shri Rahul Narvekar ji, Honorable Speaker, Maharashtra Legislative Assembly. Thank you so much, Rahul ji, for allowing us this unscheduled item in today's business
of felicitating and honoring our own beloved Shri Rahul Karadji. On behalf of teachers, staff, alumni, we want to express our love and affection for Rahul Karad sir for all the initiatives that tirelessly he is undertaking and taking MIT World Peace University to new heights every day. With the permission of the dais, I would like to read out the citation of honor for Shri Rahul Karad sir. We, the teachers, students, alumni, and staff of MIT Group of Institutions, Pune, are honored to recognize path-breaking contributions of Shri Rahul V. Karad in strengthening democratic ethos of Bharat. An educationist at the forefront of the 72 plus institutes, Shri Rahul V. Karad is known for empowering youth, women, grassroots leaders, and legislatures in the democratic functioning of our country. As an educationist, he has established several social initiatives that connect students and teachers with wider sections of people. His visionary leadership has founded Asia's first political leadership institute, MIT School of Government, in 2005. His motto, "Good people in politics will make the politics better," is increasingly resonating with youth of Bharat. 400 plus strong alumni of MIT School of Government is working with various national and state parties, bringing in quality with passion in politics. Shri Rahul V. Karad's commitment for youth's political empowerment led him to establish iconic Indian Students' Parliament, Bharatiya Chhatra Sansad, in 2011. As an indicator of a roaring success, every year 10 to 12,000 politically and socially active students from about 450 universities across 28 states and 7 union territories of Bharat participate in the annual conclave, making BCS the largest political classroom for youth in the world. Over 1 lakh alumni of BCS are making a difference today in social, entrepreneurial, educational, technological, and management field. Shri Rahul V. Karad has also provided platforms to teachers, National Teachers Congress, women leaders, National Women's Parliament, and grassroots elected representatives, Rashtriya Sarpanch Sansad. Shri Rahul V. Karad's dedication and hard work of 20 years in the field of education, social initiatives, and political empowerment has led to the initiation of National Legislatures Conference Bharat in 2023. We are very proud of the fact that as a founder convener of NLC Bharat, Shri Rahul V. Karad has successfully brought together over 1800 plus state legislatures, that is MLAs and MLCs, all the speakers and chairpersons of state legislatures, and political leaders from all the political parties on a single platform. We, the teachers, students, alumni, and staff of MIT Group of Institutions, Pune, wholeheartedly express our gratitude and affection through this citation of honor for the tireless efforts of Shri Rahul V. Karad to strengthen democracy and develop good leadership in our country. Thank you. May I now request Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Shri Rahul Narvekarji, and Honorable Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Assembly, Shri Vijay Wadettiwarji, to please present this citation of honor to Honorable Shri Rahul V. Karad sir on behalf of teachers, staff, alumni, and students of MIT Group of Institutions. May I request Sushmita Devji to please join hands, and Sachin Sawant sir also to please join hands. Thank you. I will just quickly respond. Thank you so much, Rahul Narvekar ji, Honorable Leader of Opposition Wadettiwarji,
My dear students, this is not I'm taking it as my honor, just as the seed thought, because you are the foundation. 2005, the first batch, they basically laid the foundation and they showed the trust that we want to join for this particular such program. It was 7 June 2005, Uparashtrapati Bhairav Singh Shekhawat ji inaugurated in Delhi this particular batch, Madam Sushmita ji. और बहुत अच्छा मतलब ये मन में था कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप का स्कूल कैसे क्या होगा, इसका मतलब शंका भी थी मन में, डर भी था, लेकिन इस तरीके से विडेटीवार जी इसका जो एक फाउंडेशन बना और उसी के पेट से ये सभी विषय आगे पैदा हुए। भारतीय छात्र संसद, नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट, राष्ट्रीय सरपंच संसद, सरपंचों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। और ये एमएलए कॉन्फ्रेंस के बारे में पिछले 4 साल से मुझे याद है, वेंकैया नायडू जी ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने मेरा हौसला बढ़ाया, आप सब ने हौसला, मतलब आप सब लोग इसके बहुत जिम्मेदार और एक मैं समझता हूं कि फाउंडेशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर, ऑल द टीचर्स, प्रोफेसर परिमल। ये बहुत बड़ा मतलब है, ऐतिहासिक क्षण में मानता हूं मेरे जीवन में और अपने संस्था के जीवन में कि 19वीं बैच, 19 साल तक लोग, पहले 3, 4, 5 साल तक लोग ये कब तक चलेगा सुष्मिता जी, ऐसा लोग चर्चा करते थे। हाँ, ये 2-4 ये क्या कर रहे, पॉलिटिकल साइंस तो है, इससे क्या होगा। तो हमने प्रपोज किया है स्पीकर साहब को कि सभी विधानसभाओं में ऐसे लीडरशिप स्कूल होने चाहिए, और ये 20 साल से ये उपक्रम कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं ममता जी से भी इसमें मिला था, उन्होंने भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया था। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों के माध्यम से इसको शक्ति लेके हम बहुत बड़ा ये लोकतंत्र का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में ये एकेडमिक एंडेवर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिग्री प्रोग्राम, थैंक यू। Thank you, sir. We consider ourselves fortunate enough to be a part of the NLC Bharat. MIT School of Government is known for pro-student activities. It is committed to deliver best of the academic experiences to its students. Let us reflect upon these activities through a report which I request all the dignitaries on the dais to unveil. I request all the dignitaries to unveil the annual report of MIT School of Government. A big round of applause. Thank you everyone. With this, I would now like to call upon the UNESCO chairholder, revered Professor Dr. Vishwanath D. Karad, founder and chief patron, MITES MIT, Pune, and president, MIT World Peace University, and creator, World Peace Dome. My dear learned friends who are present in this unique hall, which has been named in the name of philosopher Saint Sri Dhaneshwara, which was as such inaugurated in the year 1996. Why I'm making you to understand and know the little bit of story behind, simply because this today's occasion for this very unique school of political leadership, initially known as the MIT School of Government. Friends, when I see the Honorable Speaker of the Legislative Assembly of Maharashtra, Rahul Narvekar ji, Leader of Opposition in the Maharashtra Assembly, Sri B.Gdeshmukh ji, Madam हमारी बहन बहुत दूर से आई, सुष्मिता देव, and our close friend Mr. Sachin Sawant.
and one more mass leader is sitting in the audience, on the stage, उल्लास पवार साहब. मैं इतना कहूँगा, मुझे याद आती है the then Chief Minister of Maharashtra, Vasantdada Patil, who had as such no education, hardly 4th standard pass or fail, I don't know, who had been responsible and who gave us the permission to start such unique engineering and medical colleges in the state of Maharashtra in the year 1983. पता नहीं भाई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज जो भी आप देख रहे हो, जो हम कुछ कर सके, जिसका जिक्र बहुत सुंदरता से हर वक्ता ने किया, Rahul and his team, which has been trying to do this very unique school in the whole of country and possibly in the Asian region, on the lines of Kennedy School of Government, Harvard. And on this occasion, when we are trying to welcome you on this occasion of the batch of 19th, for this program, नेता बनने की बात चल रही है, लीडरशिप की बात चल रही है. How and what way नेता should conduct himself, लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, बड़ी लंबी बात है. Just now we have heard the words of wisdom of all the great men sitting on the dais, and now we are eagerly waiting to listen to Mr. Rahul Narvekar ji. He is a very learned scholar, thinker, philosopher, and a leader, leading a very important position of the chairman of this Legislative Assembly of Maharashtra. And these two persons, especially Vijay and Narvekar ji, sitting by side, today people must have been a little more curious. Rahul, you have done a good job through your team, but I am not to make any comments on that aspect because I have no authority at all. But friends, when your parents have shown so much of confidence in sending you from different places of India, various states, starting with Nagaland and Manipur and Orissa to Tamil Nadu and the other states of India, with a hope and expectation कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कल नेता बनेगी, जिसके बारे में हमारी देव बहन ने बड़ी सुंदरता से कहा, नेता बनना है तो कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, तुम्हारा धर्म क्या है. धर्म का मतलब है फर्ज. I can only tell you in one sentence that I myself never wanted to be an engineer at all. देखो दिशा कैसी होती है और दशा भी कैसी होती है. I wanted to be a collector, but see the fun. A person who doesn't want to be an engineer becomes an engineer, becomes a professor, starts MIT and speaks the language of peace, world peace. And finally comes to a stage when the whole world is looking to this institution and the world peace dome which has been evolved. I'm not the maker. I'm not the doer at all. But I have been given that little bit of understanding with some vision and foresight. एक नेता लोगों का भी गुण होता है. पता नहीं, बहुत लंबी बात हो सकती है. मेरे स्टूडेंट्स को मैं कभी मौका मिले तो बात करेंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा सुनना है अभी नार्वेकर जी साहब को. वैरायटीवार साहब ने जिस जैसे बयान किया यहाँ पर, बड़ी सुंदरता से नेता कैसा हो इसका भी छोटा दर्शन था वैरायटीवार साहब आपका.
आप 6 बार एमएलए रहे ऐसे मैंने सुना, मैं पहली बार शायद या सेकंड बार मिल रहा हूँ। लेकिन यही जो माहौल है, जिस हॉल को मैंने आपको बोला, फॉर माई स्टूडेंट स्पेशली, बीइंग एन इंजीनियर, being a person of particle physics, and being also a person who understands what the Google stands for, what IT stands for, what is particle physics, what is this equation E equal to mc square given by Einstein, and what are the words of wisdoms given by philosopher Sant Jnaneshwara 730 years back. 730 साल के पहले की बात है, उम्र है 16, और 16 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर ने जो बयान किया, जिस पे आज दुनिया गौर कर रही है. The whole world is looking to this country with a hope and expectation and the very appropriate understanding of what is the law, what the spiritual law and the scientific law. ये डोम का एक छोटा जिक्र किया गया, मैं आपको एक शब्द में बोलूंगा. अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला दुनिया ने पहले सुना नहीं है कभी. स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी बोला है उसको. ये भारत देश, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय तत्वज्ञान एक शब्द से बोला जाता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति. The truth is one and only one alone, which you may call Allah, Ram, Rahim, Jesus, Buddha. The names are different. My name is Vishwanath. Here there are different people sitting with different names given by their parents. The question is, what is the name of that ultimate reality, the God? The Stephen Hawkins, the greatest scientist of the whole world, writing a brief history of time from Big Bang to black hole. बड़ी सुंदर है, कभी पढ़ो भाई. Those students who have come here, you may belong to different branches, but this is what we need to understand and present to the whole world community. ये मैनेजमेंट की बात है, स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की बात है. छोटी बात बता के मैं रुक जाता हूँ. The mechanism जो है ना, ये पूरा, the body and the brain is one aspect, and the soul or the spirit and the mind is another aspect. आजकल दुनिया में खोज है मन की बात, लेकिन मन से ज्यादा दिल की बात ज्यादा अहम बात रखती है. आत्मा का स्वरूप क्या है? What is the nature of the soul itself or the spirit? And this institution has started on the top of this hill, the school of consciousness and reality. मैं अलग दिशा में बात कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, जानकार है, लेकिन यू मस्ट हैव अ वेरी विनिंग, वंडरफुल विनिंग पर्सनैलिटी. इस संस्था में चर्चा होती है. व्हाट फॉर वी आर हियर, व्हाट फॉर वी आर टेकिंग सो मच ऑफ मनी फ्रॉम यू पीपल. So to develop the winning personality, ऐसा शब्द है. What is the winning personality? To develop a positive minded personality, positive mindset, not the destructive one. And when we say positive mindset and winning personality, we say you should be physically fit, mentally alert, intellectually sharp, but spiritually elevated too. These are the 4 components of life. The living cell, the smallest of the small. These are also some of the aspects which you should try to understand and read all these aspects, variety of aspects. And then you can be a much better leader. और नेता बनने की बात हो, समाज का हो, संस्था का हो, शैक्षणिक हो, राजकीय हो, क्षेत्र कौन सा भी क्यों न हो, उसमें भी नेता बनता है ना. तो सिर्फ राजनीति करने से नेता नहीं होता है. यहाँ बैठकर भी अभी राहुल जो और हमारे दोस्त जो लोग कर रहे हैं, so that has been the path, and I can only say that in this very hall where we are discussing this issue has a very great unique story. And when I am saying Sant Jnaneshwar to Albert Einstein, ये पहली बार हो रहा है दुनिया में. ये सोचने की कोशिश करो, अपने माँ बाप को याद करो. भारतीय संस्कृति के बारे में बोला जाता है फर्ज का मतलब क्या है, धर्म क्या होता है. What is my religion? मेरा धर्म क्या है?
तो विवेकानंद ने कहा है, रिलीजन इज नथिंग बट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ड्यूटी टुवर्ड द मदर, द ड्यूटी टुवर्ड द फादर, द फैमिली, द सोसाइटी, द नेशन, द होल वर्ल्ड। वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ड है। ये जानने की कोशिश करना, यही नेता का सबसे सुंदर गुण हो सकता है। आपको इन लोगों का आशीर्वाद मिला। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड से थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Shri Sunil Tingreji present here today with us. I request Girisan sir to kindly go forward and welcome and felicitate him. Thank you very much, Sunilji, for your presence on this important occasion here today. We also have the presence of the Honorable Member of Telangana Legislative Assembly, Madam Ajmera Rekhaji. I also request her to felicitate and welcome her. Girisan sir, I would request you to kindly felicitate and welcome Madam Ajmera Rekhaji also, the Honorable Member of Telangana Legislative Assembly. Thank you everyone. My friends, it is the time that we now make certain promises. I request the students of 19th batch of MIT School of Government to rise in their seat and put your right hand forward as I request our Executive President, Shri Rahul V. Karad, to read out the oath. Please put your right hands forward. Maybe all the students can stand and just follow. You can take your name. I, Rahul Karad, the student of Master's Program in Political Leadership and Government. Kindly follow. Yeah. Hereby resolve to strive for national integrity and unity, as well as to promote democratic values, responsible citizenship, gender justice, sustainable development, and world peace. We further pledge to devote our thoughts, words as an informed citizen and as a good political leader for contribution in the nation building process. Thank you. Jai Hind. Thank you. Thank you very much, sir. A big round of applause, my friends, to all these students, those who are starting their journey today. We all wish you all the very best. My friends, it's now time when I request and invite the chief guest of this session, Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, Advocate Shri Rahul Narwekarji. And we all are aware the way he has supported, the way he has strengthened the National Legislators Conference. I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Rahul Narwekarji. Shri Rahul Narwekar is the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly. He was elected from Kolaba Vidhan Sabha constituency in Mumbai on Bharatiya Janata Party ticket. He is the second youngest person to be elected as Speaker of any legislative assembly in the country.
Earlier, he was in the Legislative Council of Maharashtra as a member nominated by the governor. He also performed as the spokesperson of the youth wing of Shiv Sena party. In May 2023, he completed a 4-day UK tour speaking at the Ideas for India conference organized by Bridge India in London and speaking with students at the Cambridge University. We warmly welcome Shri Rahul Narvekar. Put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause the chief guest of this session, Advocate Shri Rahul Narvekar ji. Welcome, sir. Thank you. Namaskar, a very good afternoon to all of you all present here today for the commencement ceremony of the Masters in Political Leadership and Government Batch 19. Present here for this function today, Honorable Vishwanath Karad sir, who is not just a torchbearer or perhaps a guiding star for students, faculty members of this institution, but a visionary which the entire state looks forward to. We also have with us Honorable Leader of Opposition, Maharashtra Vidhan Sabha, Shri Vijay, a colleague of mine, who I must say has been very cooperative in the House. We also have with us Honorable Shri Rahul V. Karad, a dear friend of mine and an innovator of sorts, who comes up with concepts which no one could have thought of. We also have with us Honorable Sachin Sawantji, also a dear friend of mine from Mumbai, whom I've had locked horns with on TV debate channels several times. We also have Honorable Sushmita Dev, truly an inspiration for young politicians, aspiring politicians, who's had a remarkable journey, who has made her mark in the Parliament of India and thereby casted a special position for herself in the minds of the youth of India. We also have with us Professor R.M. Chitnis, Dr. K. Girisan, Shri Sridhar Pabbisetti, and of course, Shri Ullas Pawarji, a former legislator and a senior politician in the state of Maharashtra. And of course, all the students and faculty members of MIT School of Governance. At the outset, let me assure you, I've seen a lot of sleeves going up and looking at the watch. I'm not going to speak for too long. And in any event, Vadetiwarji keeps reminding me, now that you're the Speaker of the House, you're supposed to speak less and listen more. So keeping up with that advice, I can assure you I'm going to be as brief as possible. Friends, the MIT School of Governance, first of all, I don't know whether to call it a school of governance or a school of innovation. Like I mentioned, when no one thought that there could be a professional course which could be named Masters in Government, a course which looks forward to creating global citizens, global leaders. It's unbelievable. I mean, a thought which goes to the bottom of nation building, a thought which creates individuals, which can create nations. Thereafter, Rahul Karad and his team came up with the National Legislators Conference, which I was fortunate to be a part of. A concept which no one thought of, giving a common platform
to legislators from around the country, in fact, around the world, to share a dais, share a platform, to deliberate on best parliamentary practices, to deliberate on issues which are relevant to their respective states, to the country, and to the world at large. It was indeed an extremely important learning process that has been initiated by Shri Rahul Karad and his team. After this function, when I spoke to several of my counterparts around the country and the Honorable Speaker of Lok Sabha, everyone was of the view that this idea has to be nurtured further and should be given a statutory platform whereby this idea can benefit the country at large. So thank you, Mr. Rahul Karad. Thank you, MITSOG, for coming up with such innovative concepts which not only develop individuals but work towards the betterment of the entire nation. Friends, as you're aware that y'all are here to perhaps get some guidance and some professional assistance in administration, in governance, and the manner in which you can win over the people at large. This, of course, is a remarkable academic course which you all have enrolled yourselves into. And I'm sure this will not only benefit each one of you all, but benefit the nation at large. And having said that, I am reminded about the words of none other than Mr. Winston Churchill, who was the Prime Minister of the oldest democracy in the world, a democracy which has evolved over 800 years, Great Britain. And he said, the best argument against democracy is a 5-minute conversation with the average voter. That speaks volumes. If the oldest democracy can have these concerns, you can imagine what would be the state of the largest democracy in the world if we weren't to apply our minds to this question raised by none other than Sir Winston Churchill. Today, we have chosen for ourselves parliamentary form of democracy. And the parliamentary form of democracy is one of the kind of governance which prevails around the world with several other types of governance. And looking at the various options around the world, I can assure you, parliamentary form of democracy may have its lacunas, may have issues, but I can assure you it is best amongst the rest. And the responsibility to cultivate and promote parliamentary democracy lies on the shoulders of young future leaders like y'all. A parliamentarian, a legislator, a member of the Jilla Parishad, member of the municipal council, or council corporators in the municipal corporation certainly have to lead by example. A leader is the one who the nation or the masses look forward to. You are supposed to guide individuals and the nation and perhaps the world at large towards the betterment of every individual. And this is certainly a huge responsibility, which I am sure that your learning in this institution shall enable and equip you to deal with the challenges in the future that you may perhaps have to face. While we stand here today to congratulate you all, to give you all best wishes for your commencement in this Masters in Political Leadership and Government course, I am sure that each one of you all has a vision in place, because without a vision, you certainly cannot progress on the path of nation building. While India marches ahead to become the 4th largest economy in the world, while India
attains the feat of becoming the youngest nation in the world with the average population of 27, if we have to use this demographic advantage towards making our nation the best nation in the world, to making our nation the most forward economy in the world, or perhaps the most powerful nation in the world, I'm sure we need to convert this advantage into a skilled population, which institutions like the MIT have been striving for. Friends, like none other than Mahatma Gandhi said, be the change you want to see. You as leaders will have to imbibe this amongst yourselves to ensure that you stand up as leaders, that you stand up as an example in the society, and thereafter seek to change the society at large. I'm sure that you all shall stand up to the challenges in the future and work dedicatedly towards the betterment of this nation. I'm also reminded of the words of Dr. Martin Luther King Jr., who said, "It is not the violence of a few, but the silence of the many that bothers me." And when I say that, you as leaders will not only have to talk about issues which have been created by a few, but you will have to also take up issues which a large section of the society is silent about. And therefore, as leaders, this is another aspect which you all will certainly have to look forward to and work towards. I'm sure your training at the MIT School of Government will equip you with perhaps situations Yes, I shall certainly speak about that. So, my friend Rahul has just expressed a concept which Rahul and me have been talking about for quite some time now, that this School of Governance and the School of Government should be extended to the state legislature as well. I'm very pleased to inform all of you all that perhaps from the following year, we shall be starting a course for governance at the Vidhan Sabha in Nagpur, at the Central Hall at Pune, and in the Vidhan Bhavan at Mumbai, in association with the MIT, which shall not only benefit the students of MIT, but shall also benefit the legislators of Maharashtra, who shall stand to serve the people of Maharashtra, and thereby the entire state of Maharashtra shall benefit. Having said that, Rahulji, I think the Maharashtra state legislature and MIT should have an exchange program where we'll be pleased to welcome students from MIT to come and do internships with legislators, with the Speaker's office, with the Deputy Speaker's office, with the Chairman's office, with the Deputy Chairman's office, Leader of Opposition office. And we shall be also happy to send our legislators for a crash course in your institute. Students here are perhaps going to be parliamentarians, legislators in the future. You'll perhaps be sitting and working in the House, which I am currently presiding. I don't know by then whether I will be presiding over that House, but I am rest assured that after we have legislators from the MIT sitting in the Vidhan Bhavan, the job of the then presiding officer will not be as difficult as mine. So, my best wishes to all of y'all. I know we do have time constraint. We were to wind up this program by 1:30 and we've exceeded that time. I also have some pre-decided appointments in Mumbai which I have to attend at 4 o'clock at Vidhan Bhavan. And as I've promised, I have tried to keep myself as brief as possible. It would have been a pleasure to go on
And I'm sure I'm going to take up this opportunity in the times to come, where I shall definitely attend more functions of the MIT, especially with regards to topics which concern you and me. Thank you for having me here today. It was indeed pleasure to be here today. The idea of Vasudhaiva Kutumbakam is imbibed in the culture of India. And I'm sure you all won't only aspire to be leaders of India and Maharashtra, but you all will aspire to be global leaders to make the country proud. Thank you once again. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you very much, sir. Indeed. And I request all the students of MPG 19th batch to come on stage, please, for a group photograph. I request dignitaries to be seated, please. Dignitaries are requested to be seated. MPG 19th batch, kindly come on stage. I request dignitaries to be seated, please.